Okay, good evening, everyone. Am I audible? Good, good. So let's start the session for today. So since some person is saying side view, Zakir, please check out that side view. They are complaining. Cool. So since 3 days or 2 days, we are learning about this Spring security, and I know that some of you might getting some little tough about this Spring security, especially those students they are learning first time. जो स्टूडेंट async वाले हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा and they know the what is the weightage and importance of the Spring security concept. Again, I'm saying that ki what this time in SB 201 we have added some few extra topics. This is the first time we are just added in this main curriculum, that is Spring security, logging. Then after hopefully today or tomorrow onwards we will start that our JUnit and RestTemplate. So these few topics we have added. Based on that, your interviews or in your placement batches, those students, they are getting this type of questions. So we thought like that we should put that in our main curriculum. That's why it is there. And Spring security, and basically this topic is not so much easy topic. You can see that you can even, if you go to a particular blog or if you try to check out that related some doubts. So in a Stack Overflow, lots of doubts, lots of problems are there. Even if you go to the YouTube videos and some Udemy video, you will not get proper solution as for that JWT filters and all those topics. It is not so much easy topic. So you need to just also show your maturity level. I'm trying to explain in much more easier way. कुछ जगह पे थोड़े से problem आपको आ सकते हैं. It is natural because I told you that it is not so simple like that. Our data GP and all the other concepts simple ही है, but it need your what practice and concentration. एटलीस्ट आई रिकमेंड दैट कि जो एप्लीकेशन हम क्लास में बना रहे हैं ना, या जो एप्लीकेशन हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ ऑन LMS, एटलीस्ट यू शुड रन दैट एप्लीकेशन. try to do some R&D over there also. Yes, Prathamesh is saying on YouTube you got old approaches. Yes, those approaches are deprecated, not at all recommended. And in fact, the latest releases related doubts and query, if you try to search in the Google or Stack Overflow, you will not get any kind of proper support and suggestion. So, जो example at least हमारे session में live session में execute हो रहे हैं ना, at least those example you should run on your machine as well, and try to understand the flow कि exactly काम कैसे कर रहा है. Behind the scene, everything is doing your framework. Remember one concept here, that is what Spring, and Spring security is one type of framework. Framework का काम ही होता है चीजों को आसान बनाना. And they have done that means they have done simplified this security related approach in very easier manner. Just you need to understand their concept, how the flow is basically going on. What is the role of the filters, and what is the role of authentication object. Put that in your notepad and in your, if you are maintaining your notes as well. So keep some few classes and interface in your notes. These are the classes and how these classes are communicating with each other, and how the things is working. Otherwise, behind the scene, just you need to just say that if you want to apply the authorities, कि किस user को क्या permission मिलने चाहिए. See that how much it is easy is implemented in our Spring security. You need to write very simple. That means one granted authority list in which you are going to maintain that authorities. And then you just need to apply that there. What is the has role, has any role, or has authority, or has any authority in the configuration. And everything will be taken care by the framework. The cookie generation, last class we have seen that what is the CSRF attack. So CSRF के token हम नहीं बना रहे थे. We just created one filter and we have just done some configuration. Automatically that filter CSRF token got released in our response, and those again we are sending back to our client to access the put resource and the post resource, and those tokens is also going to be get validated. वो काम हम नहीं कर रहे हैं. That is work is taken care by the Spring security. Don't worry, last class we have discussed about the authorization, and then we discussed about role-based and authority-based authorization also we discussed. Then after we discussed about what CORS configuration. CORS configuration की जरूरत तब पड़ती है जब आपका एप्लीकेशन आप अलाउ करो किसी जावा स्क्रिप्ट से कॉल करवाने के लिए. जैसे आप एंगुलर से, रिएक्ट से, किसी भी जावा स्क्रिप्ट वाले एप्लीकेशन को आप चाहते हो अपने एपीआई को कॉल करो, वहां पे हमारा बाय डिफॉल्ट ब्राउजर CORS configuration के थ्रू हमारे रिक्वेस्ट को स्टॉप कर देता है. So you need to do that configuration.
And it's a very simple configuration. Last class we have seen that how much it is easy if you apply that course configuration. So just you need to apply that. No need to write anything. Just in a app main configuration class, you need to just specify this configuration here. That is course, and in that using this course, and you need to pass the course configuration source class object. You need to override the method and define these many statements. That is, you need to create the course configuration object, and using this pattern, you can allow कि किस किस हम URL को allow कर रहे हैं, कौन से method को allow कर रहे हैं. So those details you can assign. That's it. Just few line of code and your course configuration is going to get resolved. ये भी जरूरत कब पड़ेगी आपको जब if you are trying to get your application connected with the front end Java script. But internal अगर microservices API से call करवा रहे हो, then this configuration is not required. But as just now you are creating some assignments or you are solving the assignment, in the assignments we have made that front end part should be created by you, at least the minimum front end. So in that one you have to enable this configuration course. Next concept we discussed about the CSRF. CSRF concept भी हमने देख रखा था. इसका main focus क्या है CSRF का? By default, our Spring security won't allow any user, whether the front end or the any kind of user, put request and post request. जिससे कि कोई data आपका update कर दे या delete कर दे, चाहे आप उसे वो permit भी कर दो, तभी वो आपको allow नहीं करेगा. In that case, simplest way you can do that CSRF disable. लेकिन हमारे पास दो option है. Ignoring some request, कि कोई put request या post request harmful नहीं होता, वो call भी कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं. उस केस में हम क्या करते हैं, we know that what we need to do. And then after next what to do, we have behind the scene, we need to apply one trick. We need to generate one CSRF token, and based on the token we can just whenever the request will go, when we do the initial login, that time it will generate two session ID. One is the J session ID, basically two cookies. One is the J session ID and one is the XSRF token. So for the next request, what you need to do, you need to embed that CSRF token on the header, and it will automatically validate that your request, and then you will able to call your post request and put request. But if you are not feeling comfortable about CSRF, because you are not developing any very real time or large application for your project, if you are not creating that or not concerning about those kind of CSRF attack, then simply in your project you can disable this. Believe me, last time when I was taught that CSRF attack, Spring security, basically, I didn't taught about this CSRF token. Because of that, some students, few students, they just raised this concern, this CSRF token hum kaise banate hain, how to use that one properly. That's why I kept that in our curriculum, and we have spent some time. I know personally that some of you may not understand some filters, how we have created, what is the role of the filter. I have applied the filter on before. What is the filter chain? So don't worry, today we will get the much more clarity on that. But still I am saying that CSRF, if it is not required, it is not mentioned properly, you can simply disable this. And if you have understood this concept, then you can at the last, you can apply this CSRF token as well. To call any put request, you have to pass that two cookies. One is the J session ID as well as a CSRF token. Okay, so last class we have developed this application of CSRF attack, and in this CSRF configuration we did lots of things. Let me show that app configuration class. And first of all, कुछ URI को हमने क्या किया था, ignoring request matcher. ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, इसके लिए हमें CSRF की जरूरत नहीं है, टोकन की जरूरत नहीं है. लेकिन और जो हमारे रिक्वेस्ट होंगे, पुट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट, उनके लिए CSRF टोकन की जरूरत पड़ेगी. In that case, we have did this statement, and we have created this request handler object over here. Based on that, what will happen behind the scene, Spring security will create the token, and this statement will validate the token in your header. Now, after that, what we did, we created one filter, and this filter we have applied, add filter after. जब हमारा authentication complete हो जाए, तब ये filter हमने apply कर दिया. ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जब ये response जाए, तो response में CSRF की जो cookie हमारी आ रही है या जो token है, वो add होके चले जाए client के पास, as a part of header also. So that's why we have added.
But again, I'm saying if you're not able to understand this, what is this add filter after and how this we will do that, this filter we created this filter. And if you notice this filter, I have used once per request filter. We have overridden this do filter internal method. इसके अंदर कुछ parameter है और filter chain dot do filter. I've just written this class and overridden this method. I just used the copy pasted approach. Why I have done that one? Because again, I told you what, again, I'm saying here, this CSRF filter is purely optional. If it is not required, you can disable. But don't worry, in today's session, we are going to discuss in much more detail about this filter. And we are going to start this filter from very beginning. Am I clear till this point? Please confirm. Cool. So let's move on and start with the filter. So filter जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट किए थे उसी वक्त हमने बताया था कि फिल्टर का क्या रोल होता है. रोल होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी में, स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्सेप्ट फिल्टर पे ही इंप्लीमेंटेड है. और फिल्टर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले जो सेशन में हमने बात की थी, दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड द स्प्रिंग सिक्योरिटी, इन दैट नोट्स we discussed about this filter and this approach. That means when we give the request, what exactly used to happen. Here, this diagram. So this is your typical Spring Boot application where dispatcher servlet is there, and when the front is the front controller, जो भी request जाता है dispatcher servlet के पास, and then it will pass the request to the REST controller. But behind the scene, there are lots of filter chains are there, multiple filter. Filter का काम क्या होता है? It is just like your assistant of your servlet. So before reaching your request to the servlet, you can apply some logic. You can apply some pre-processing logic and post-processing logic using filter. It's a purely servlet related concept. अब जब servlet detail में पढ़ोगे तो वहाँ पे हमें filter भी पढ़ना पड़ता है, how to create your own filter. And using that filter, you can pre-request. That means कुछ request जाने के पहले की process को हम अगर use करना चाहें, data को validate करना, या फिर हमें कुछ और भी डिटेल्स फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी मेंटेन करना, ऑथेंटिकेशन करना, ये सब कुछ सही हो तभी ये रिक्वेस्ट हमारे सर्वलेट के पास पहुंचे, अदरवाइज वो यहीं से रिजेक्ट होगा. तो हम फिल्टर बनाते हैं और फिल्टर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं. और फिल्टर के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि हम एक के साथ साथ कई सारे फिल्टर, एन नंबर ऑफ फिल्टर्स वी कैन पुट देम इन अ सीरीज. तो फिल्टर नॉट ओनली विल इंटरसेप्ट योर रिक्वेस्ट, इट ऑल्सो यू कैन डू दैट प्रोसेसिंग लॉजिक. जब ये रिस्पॉन्स आएगा तब भी हमारा फिल्टर क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को भी फिल्टर कर देगा. और उसमें हम क्या करते हैं सर, हियर वी कैन ऐड सम एक्स्ट्रा लॉजिक, वी कैन डेकोरेट आवर रिस्पॉन्स. We will see about this filter here, so let me just show you here. So please listen carefully here. Filters inside the Java web application can be used to intercept each request response and do the same pre-processing and post-processing for each client request. And using the same filter, Spring Security enforce security based on our configuration inside Spring Boot application. इसी filter के through हमारी Spring Security implement हुई है. Okay. अगर हम देखना चाहें कि कितने filter applicable हैं और Spring Security में क्या-क्या filters हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम कुछ एनोटेशन, एक ही एनोटेशन है मेन क्लास पे लगा के, and this line we can put that in our application.properties. Basically this is enabling the debugging mode or debug log file logging. So log details you can, and you can check out that key how many filters are there activated in your project. Let me do that one. So last class we have created this last application, that is हम यूज करते हैं ये CSRF वाला प्रोजेक्ट ही. तो इस CSRF प्रोजेक्ट में हमें बस दो चीजें करनी है. फॉर द फर्स्ट थिंग, इन अ मेन क्लास आई एम गोना अप्लाई वन एनोटेशन, दिस वन, enable web security debug is equal to true, import this annotation. And second thing, in application.properties we need to set this logging label to debug. तो इससे आप सारे स्प्रिंग के क्लास के लिए डीबग वाले लॉगिंग लेवल, यू नो दैट व्हाट इज द लॉगिंग लेवल, info, debug, trace, error, we have seen that already in our logging section. And in this case सिर्फ फिल्टर प्रॉक्सी चेन वाले क्लासेस के लिए डीबग हम इनेबल कर रहे हैं, लॉगिंग हम इनेबल कर रहे हैं. तो डीबग वाले जितने लॉग हमारे मैसेज होंगे वो प्रिंट होगा क्या इससे. लेट मी जस्ट रन दिस एप्लीकेशन एंड शो द मैजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट.
If I run this application, this time we can notice in the console. So security debug is enabled. This may include some sensitive information. Do not use in the production system. It is saying that here warning also. It should be in a just development environment is fine, but we should not put that in our production system. That means in a production environment. So just wait for another couple of minutes. Cool. So my application is up and running. Now let me try to log in myself through the, sir, what is the use of security debugging? सिक्योरिटी डिबगिंग का मतलब आप यहाँ चेक कर सकते हो. एक्चुअली हम डिबग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉग फिल्टर हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए कि जो वहाँ पे जो लॉग मैसेजेस होंगे ना वो आपको प्रिंट हो जाएंगे कि कौन कौन से फिल्टर्स एक्टिवेट है. लेट मी जस्ट रन दिस एप्लीकेशन एंड शो यू वन एग्जांपल. सो आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राइंग टू लॉग इन माय सिस्टम. सो गेट एंड हियर आई नीड टू गिव साइन इन. And in the authorization, we just give that username and password, send the request. So Ram got logged in. And now you can notice in our console. So how many security filter chains are there? Lots of information got printed here. That's why it is mentioning that lots of sensitive information could also be there. Just like that, XSRF token is mentioned here because I have applied the CSRF in this application. Then after you can notice what is the local host, that means our port number and the application things, what is the URI, what is the cookie JSession ID as well, and XSRF token you can notice here. Now, this is the important thing, security filter chain. अब आप यहाँ पे देखो कि कितने सारे filters activate हुए हैं हमारे application में. Those filters got listed out, like disable encode URL filter, web async manager integration filter, CORS filter, CSRF filter, logout filter, user password authentication filter, basic authentication filter, and all those filters are there. Authorization filter is also there. इसका काम सिर्फ authorization को check करना है in that granted authority list. Now you can notice हमने कल filter एक add किया था अपने example में, CSRF cookie filter. I have created and I have configured this in my app config file. और इसे हमने add किया था कहाँ पे? Add filter after basic authentication filter के बाद इस filter को हमने, ये manually created filter है. तो आप यहाँ पे देखो इस login में यहाँ पे हमारा filter भी display कर रहा है. Here it is, basic authentication filter के ठीक बाद CSRF cookie filter. This is our filter, and these filters are the pre-created filter. इनका काम क्या है? इनका वही काम है कि आपकी एप्लीकेशन को टोटली चेक करना, मतलब सिक्योरिटी जनरेटेड कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं. CSRF फिल्टर का काम है कि वो पोस्ट एंड पुट रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना है. यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर का काम क्या है? यूजर नेम पासवर्ड को जब हम ब्राउजर से लॉगिन करते हैं उस वक्त ये पासवर्ड को लेके और उसे फिर ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है. So these filters are responsible to perform lots of activities. Okay. Now let's see that here. So if you do this configuration, we are going to get this type of filter in our console. So that filter we are discussing about there. Now, basically a filter होते क्या है इसके बारे में हम already बात कर चुके हैं. But let's see that a filter is a component which receives the request, process its logic, and hand over to the next filter in the chain. अगर कोई दूसरा filter है उस chain में तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगा. इस फिल्टर का ऑर्डर भी है ना, काफी इंपॉर्टेंट होता है. तो पहले इस फिल्टर के पास जाएगा, फिर इस फिल्टर के पास जाएगा. लाइक दैट द फिल्टर विल एग्जीक्यूट, पास टू द नेक्स्ट फिल्टर. ईच फिल्टर हैज ए स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सॉरी, स्प्रिंग सिक्योरिटी हियर इज बेस्ड ऑन द चेन ऑफ सर्वलेट फिल्टर. सो फिल्टर यू कैन से, और यू कैन से सर्वलेट फिल्टर, क्योंकि फिल्टर जो सर्वलेट का ही कॉन्सेप्ट है. Each filter has a specific responsibility, and depending upon the configuration, filter can be added and removed also. That means we can add our own filter also.
We can enable, we can remove some filter also. We have this authority. We can do some configuration. We can add our custom filter as well based on our the requirement. We have done that one last class. वो फिल्टर हमने क्यों ऐड किया था? इसलिए कि जब वो रिस्पॉन्स जाए क्लाइंट के पास तो हेडर के अंदर जो रिस्पॉन्स के हेडर होते हैं वहां पे CSRF टोकन भी चला जाए. That's why we have added this filter. ये रिस्पॉन्स तो जा ही रहा है, सर्वलेट हमारा रिस्पॉन्स दे देगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर में उस रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और उसके हेडर में अपने CSRF टोकन को ऐड कर दे रहे हैं. तो क्लाइंट हमारे CSRF क्लाइंट को दो जगह से उसे CSRF टोकन मिलेगा. एक तो कुकीज के थ्रू भी मिलेगी और एक रिस्पॉन्स के हेडर में भी मिलेगा. You can notice once I just logged in, so you can see here 2 cookies are there. So 2 cookies are there, one JSession ID, XSRF token. So XSRF token is a CSRF token. And in the header also you can notice, here it is, XSRF token. So ये token अगर हम वो cookie add नहीं करते तो ये हमारे header में add नहीं होता. Because of this, it is adding in the header and the second cookie is going there. We have used this cookies CSRF filter. We have created manually and we have added. I hope you got the point कि ये filter हमने क्यों add किया था कब. Please confirm. Good. अब let's see that we are going to implement our custom filter. इससे ज्यादा आपको filter के बारे में थोड़ा और ज्यादा आसानी आ जाएगी समझ में. So we can create our own filter by implementing the filter interface. हमारे पास एक filter का एक interface होता है, वो filter का interface का नाम है that is javax.servlet.filter. So this is an interface. We need to implement this interface and we can create our own filter. और वो filter बनाने के बाद हम इन filter chain के अंदर कहीं पे भी हम इसे inject कर सकते हैं और अपने लॉजिक को हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. Now, this filter is having one method. We have to, since it is an interface, so we need, it is having one method called doFilter. और doFilter method के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं. We have created our own filter yesterday also. Yes, Nitish, we have created our own filter. लेकिन हमने जो filter कल बनाया था ना, आप वहां ध्यान से देखोगे. If I have created one filter that is CSRF cookie filter. This is our filter here. And here we have extended once per request filter. I have extended one class. अभी हम बात क्या कर रहे हैं, एक filter की जो कि एक interface है, Java X servlet filter. ये हमारे Java की servlet API से related है. And this is the main filter interface. तो सर ये class क्या है? Once per request filter. इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. This is a part of your Spring security. We will discuss about that one. Just first let's talk about this normal, because we are starting the filter from very scratch. Okay, so basically हमारे पास क्या है, filter नाम का एक interface है जो कि Jakarta basically is the Java X changed to the Jakarta. So Jakarta.servlet package के अंदर है, and this it is having one single method doFilter. This doFilter is having 3 parameters, that is servlet request, servlet response, and filter chain. Servlet request means it represents the HTTP request. We use this object to receive the details about the request from the client. मतलब जो भी client request भेजता है ना, तो हमने जो पढ़ा था शुरू में HTTP के request में request header होते हैं, URI होती है, request body होती है. So entire information you can get from this servlet request, one parameter. Using this servlet response you can generate, इसी से हम response generate करके server के पास भेजते हैं. And this filter chain, it represents the collection of filters with a defined order in which they act. It uses the filter chain object to forward the request to the next filter in the chain. अब ये जो filter chain जो object है ना, इससे हम क्या करते हैं, अपने series में अगले वाले filter के पास delegate कर दें, और अगर अगला कोई filter ना हो तो directly सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट चला जाए, क्योंकि फिल्टर एग्जीक्यूट कब होते हैं, सर्वलेट के ठीक पहले. तो फिल्टर चेन के पास हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट ले लें क्लाइंट की और उस पर कुछ मॉडिफाई कर दें और फिर हम उसे फॉरवर्ड कर दें अगर कोई अगला फिल्टर है उसके पास, और अगर कोई अगला फिल्टर नहीं है तो डायरेक्टली सर्वलेट के पास. So we can add a new filter in a Spring security chain either before, after, or at the position unknown one.
अब ये फिल्टर तो हम बना लेंगे, ठीक है, इस मेथड को डू फिल्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर बना लेंगे, कुछ लॉजिक भी लिख लेंगे। लेकिन इस फिल्टर को हम अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी में कैसे ऐड करें? सो वी हैव द थ्री प्लेसेस, थ्री वे टू ऐड देम। एक तो बिफोर, सेकंड आफ्टर, एंड थर्ड एट अ पोजीशन। फॉर दैट वन वी हैव द थ्री मेथड्स आर देयर। ऐड फिल्टर बिफोर, जहां पे अपना फिल्टर और किस फिल्टर के पहले आपको लगाना है। ऐड फिल्टर आफ्टर, आपका अपना फिल्टर और किस फिल्टर के बाद हमें ये फिल्टर अपना लगाना है। ऐड फिल्टर एट, मतलब किसी स्पेसिफिक फिल्टर के पोजीशन पे हमें यूज करना है, इसी फिल्टर के पोजीशन पे हमारा ये फिल्टर एग्जीक्यूट हो। और फिल्टर इज हैविंग देयर ऑर्डर, तो एट विच ऑर्डर। सो इट डजंट मीन दैट कि ये एट वाला उस फिल्टर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जैसे हम एट फिल्टर की जगह पे लगाएंगे ना कि हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर की जगह ये लगा दो, तो बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर रिमूव नहीं होगा, बल्कि उसके आगे पीछे कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है हमारा फिल्टर। We can't have the guarantee. We don't have the guarantee about that. Now let's see that about all these things one by one. Add filter before. कल जो हमने यूज किया था अपने एग्जांपल में इन द CSRF, तो हम कहाँ पे इस फिल्टर को लगाया था हमने? ऐड फिल्टर आफ्टर। ऐड फिल्टर आफ्टर मतलब बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो हमारा है सीरीज में, इसका काम क्या है? ऑथेंटिकेशन को कंफर्म करना। वंस द ऑथेंटिकेशन इज डन, उसके बाद हम ये फिल्टर हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ हियर इफ यू नोटिस, सो कस्टम फिल्टर लगाने के जो पॉइंटर होते हैं, सपोज इफ आई एम यूजिंग ऐड फिल्टर बिफोर, सो पहले इसका हम एग्जांपल देते हैं। सो लेट्स क्रिएट ए कस्टम फिल्टर, रिक्वेस्ट वैलिडेटर फिल्टर, एंड कॉन्फ़िगर इट बिफोर द बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर इन द स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर। अब हम एक अपना फिल्टर बनाते हैं और उस फिल्टर को कहाँ यूज करेंगे? ठीक बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले। क्यों बना रहे हैं ये फिल्टर? कि कुछ रिक्वेस्ट वैलिडेटर, हम रिक्वेस्ट में कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीजें होनी चाहिए, नहीं होगा तो हमारा रिक्वेस्ट वहीं पे कैंसिल हो जाए, सर्वलेट के पास जाए ही। सो दैट टाइप ऑफ फिल्टर आई एम गोइंग टू क्रिएट। सो रिक्वायरमेंट हमारी है कि रिक्वेस्ट हेडर शुड कंटेन अ की अलाउ, और उसका वैल्यू है वो वैल्यू टेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, प्लीज कंसंट्रेट हियर। जब हम रिक्वेस्ट फायर करते हैं ना यहाँ से अपने पोस्टमैन से या कहीं से भी रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट के हेडर में हम चाहते हैं कि एक वैल्यू हो, उसका की हो अलाउ, और उसका जो वैल्यू हो कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। मतलब की अलाउ होना चाहिए और वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन वो वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये रिक्वेस्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, इस रिक्वेस्ट को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। गॉट इट? प्लीज कंफर्म। और ये वैलिडिटी कौन चेक करेगा? सर व्हाई लाइक दिस? बिकॉज दिस इज आवर कस्टम रिक्वायरमेंट। हम क्या करना चाहते हैं कि अपने रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना चाहते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट। व्हाई लाइक दिस डजंट हैव लाइक मीनिंग, बस आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हम यूजर से चाहते हैं कि वो एक हेडर एक्स्ट्रा भेजे, हमें नहीं भेजेगा तो दिस इज नॉट अ वैलिड रिक्वेस्ट, राइट? एट प्लेस ऑफ टेस्ट वी कैन पुट एनी वर्ड। यस, सिर्फ टेस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पे दूसरा कोई भी वर्ड चलिए। ये हमारी कस्टम लॉजिक है। हम चाहते हैं कि ठीक है टेस्ट ना हो, हम चाहते हैं कि इस हेडर का वैल्यू रतन ना हो, और भी कुछ कोई दूसरा नाम चलेगा यहाँ। मेक सेंस? एंड इट इज नॉट लाइक दैट यू कैन डू एनी काइंड ऑफ, जो क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट से, आप उसमें कुछ भी चेक कर सकते हो कि उसके बॉडी में ये चीजें ना हो, रिक्वेस्ट के बॉडी में, रिक्वेस्ट के हेडर में ये चीजें ना हो, एनीथिंग, एनी लॉजिक यू कैन राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट है ये कि रिक्वेस्ट के हेडर में एक अलाउ नाम का एक हेडर होना चाहिए, और उसकी जो वैल्यू हो वो टेस्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी आप लिख दो चलेगा, बस टेस्ट वर्ड नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? Let's create that this filter. So with this one, what I'm going to do here, I'm taking the different application in which I have not used the CSRF protection. वहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे कॉल करने के लिए अब हमें दो कुकीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको और सिंपल कर देते हैं। And I'm going to take my previous example, that is where I have not used the CSRF, where I have just used the CORS configuration, और कायदे से CORS की भी जरूरत नहीं है, लेकिन let it be. So I'm using this CORS role with CORS app, इसे हम कॉपी करते हैं and I'm pasting this one. Let me, okay, server is stopped. And here I'm just renaming this role with filter. So this application got
one another copy is created. It will be resolved first. अब इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. पहले तो इस एप्लीकेशन का नाम हम कॉपी कर लेते हैं और इसके pom.xml में इसके आर्टिफैक्ट में नाम हमारा पहले वाला ही होगा. यस इट इज आर्टिफैक्ट आईडी. इसे रिप्लेस कर देते हैं इस नाम से विथ फिल्टर और इस एप्लीकेशन का नाम भी जो है यहाँ पे बदल देते हैं क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो पुराने एप्लीकेशन का ही नाम यहाँ पे मेंशन था. अभी अपने नए एप्लीकेशन का नाम हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है. Cool. So this application is done. Now इस एप्लीकेशन के अंदर हम लिखते हैं अपना फिल्टर. तो इसके लिए इसे ओपन करते हैं and here in the config I'm creating one filter. There is one class और उस क्लास का नाम हम रख देते हैं request validator filter. कुछ भी रख सकते हो. This is your filter, so you can give any name. And this class should implement which interface? Filter interface. Filter Jakarta.servlet. बहुत सारे filter हैं. If you notice here, org, hibernate, and aspect weaver, iterator. So we have to use the correct one, Jakarta servlet. And in which I have a method. So add unimplemented method. See that the method name is doFilter. और इसके अंदर 3 पैरामीटर है, request, response और filter chain. इससे आप रिक्वेस्ट के सारे डिटेल को एक्सेस कर सकते हो कि उसका हेडर क्या है, उसके वैल्यू क्या है, उसके बॉडी में क्या है. राइट. रिस्पॉन्स से आप रिस्पॉन्स को टैम्पर कर सकते हो, रिस्पॉन्स में कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो और फिल्टर चेन से इस रिक्वेस्ट को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सकते हो. सो लेट्स राइट आवर लॉजिक इन दिस फिल्टर. ठीक है. अब पहला काम जो है कि हमें हेडर के वैल्यू को निकालना है, चेक करना है कि उसमें एक हेडर का वैल्यू अलाउ होना चाहिए. अब ये जो नॉर्मल सर्वलेट रिक्वेस्ट है ना, नॉर्मल सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है. इट डज नॉट हैव एनी कैपेबिलिटी टू गेट द HTTP पावर because request will coming through the HTTP request basically will come. It can't get the entire details of your HTTP like cookies information, like header information. तो उसके लिए इसका एक चाइल्ड क्लास है and that child class object is the HTTP servlet request. हमें इस रिक्वेस्ट को उसके चाइल्ड क्लास में डाउनकास्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम हेडर वाले इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें, कुकीज वाले इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें, कुछ HTTP के रिलेटेड और भी जो पावर है उनको हम यूज कर ले. वी कांट यूज देम विद दिस द प्लेन सर्वलेट रिक्वेस्ट, बट इट इज हैविंग वन चाइल्ड इंटरफेस कॉल्ड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. सो आई नीड टू डाउनकास्ट दिस रिक्वेस्ट इन द HTTP servlet request. This is a child interface. If we hold that in a HTTP servlet request, HREQ. Similarly, इस response को भी हम downcast कर देते हैं. That is HTTP servlet response. And here is that HTTP servlet response. HRES. Now let me repeat once again. This servlet request basically, whenever you are firing any request, so this servlet request object will hold entire details about the client. Client से जो भी हमें पता है कि जब हम HTTP से रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो बटन क्लिक करे या पोस्टमैन से या कहीं से भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इस रिक्वेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें भेजते हैं. क्या चीजें? हम उसके साथ बॉडी भेजते हैं, उसके साथ हम कुछ हेडर भेजते हैं. राइट. वी सेंड दैट URI ऑल्सो, वी सेंड द मेथड नेम ऑल्सो. रिकॉल जब हम HTTP के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर पर रहे होते हैं, when we started that our servlet Spring Boot first time, we have discussed the entire diagram I have created, which is having the 3 section for HTTP request: initial request line, request header, request body. So request के साथ हम बहुत सारी चीजें भेजते हैं. Right? So this servlet request will encapsulate all the details. But this is a plain servlet request. It does not have the power of HTTP. What is the meaning of power of? Power of means you can't get the header information about the request. You can't get the cookies information. You can't perform some that is a powerful things which is supported by the HTTP.
So in order to do so, this interface is having a child interface called HTTP servlet request. So सुपर क्लास के पास लिमिटेड पावर है, इसके पास कुछ ज्यादा पावर है. इससे हम हेडर की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. हेडर की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के जो हेडर आ रहे हैं उनकी डेटा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. Am I clear? Please confirm. So that what we did, I just did the downcasting. पहले हमें पता है सुपर क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में कैसे डाउनकास्ट करते हैं. सो दिस इज एन सुपर इंटरफेस, दिस इज अ चाइल्ड इंटरफेस. आई जस्ट डाउनकास्टेड दिस, और हमें इसका चाइल्ड वाला स्पेसिफिक, दैट मींस स्पेशल जिसके पास पावर है जिससे हम हेडर की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर ले, वी गॉट दैट. तो ये दोनों ऑब्जेक्टों को हमने इसके चाइल्ड वाले में डाउनकास्ट कर लिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट लेट्स राइट आवर लॉजिक. So what I'm going to do that, some logic I have here also I have done that. Now I'm going to just copy this logic first. And let me paste it here. So this should be the HREQ. Now, अब इस HREQ मतलब HTTP servlet request, यहाँ से हम इसके header information को accept कर लेंगे. तो I'm saying that hey, give me the header value allow. जो अगर allow नाम का कोई header है तो वो हमें header दे दे. ये मेथड हमारे नॉर्मल रिक्वेस्ट में नहीं था, इसीलिए हमें ये डाउनकास्ट करना पड़ा. आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. सो आई एम सेइंग दैट यू कैन बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी हेडर, एनी रिक्वेस्ट header. Let's say that you are passing the lots of headers are there in a normal request, like user agent, cookies, post case control, connection, XSRF token, whatever the headers are there, you can get this type of information with this object. So I'm saying that give me the header whose header name is allow. ये हमें स्ट्रिंग में मिल जाएगा. अब हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, listen carefully. I'm saying that if header is equal to, मतलब ये allow का जो header होगा ना, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे. अब अगर किसी ने allow का header नहीं भेजा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी हमें नल. और किसी ने allow का वैल्यू भेजा है तो नल नहीं होगा, वो वैल्यू होगी. तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा. तो इसका बेसिकली होना चाहिए हेडर वैल्यू. तो हेडर हम मांग रहे हैं अलाउ का, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा. तो आई एम सेइंग दैट हियर है, अगर ये हेडर नल है मतलब किसी ने अलाउ नाम से हेडर भेजा ही नहीं. राइट, अलाउ क्या है, ये हमारा मैनुअल एक चीज है. मैनुअल हमने एक हेडर लिख दिया. जाहिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे आप अलाउ की जगह आप लेट्स से दैट आई एम सेइंग कि यहाँ पे हेडर होना चाहिए माय टेस्ट हेडर, माय टेस्ट हेडर. तो अब हमें यूजर से हम चेक कर रहे हैं कि यूजर आपको ये माय टेस्ट हेडर नाम का एक हेडर एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा और उसका वैल्यू टेस्ट नहीं होना चाहिए. Am I clear? Please confirm. तो allow is a manual word. Manual word I have written. आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ. अब इसी नाम से यूजर को एक हेडर भेजना पड़ेगा. राइट, तो हम कह रहे हैं कि यूजर आप allow नाम का एक हेडर बना के भेजो और उसका वैल्यू आप रिकॉल, आप टेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू दे दो. तो अब हमने पहले हेडर ले लिया कि अलाउ नाम का कोई हेडर आ रहा है तो प्लीज हमें उसकी वैल्यू दो. इट द नेम ऑफ द हेडर which will contain some value, right? Yes, we will see that. Let me just complete that, then you will get the clarity automatically. So I'm saying that, hey user, you need to send one extra header with name allow. और जैसे हमने यहाँ पे get header किया तो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें. We got the value. अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि इसका वैल्यू अगर null है, right? Nitish is saying, sir, how the client know he has to use the header? Yes, good question, Nitish. Here we are the developer, and based on our client contract, we need to tell the client कि आपको ये header भेजना पड़ेगा. जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा होगा कि हमने CSRF टोकन भेज रहे थे हम हेडर से, तो हमें क्लाइंट को बताना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, है क्लाइंट आपको एक हेडर भेजोगे तभी आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, हमारा एप्लीकेशन आपको स्टॉप कर देगा. Does it make sense? So since it is a demo application, how this filter is working, this is our main concentration. I'm just going to show you कि हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कैसे करते हैं. So हम यहाँ पे एक इम्पोज कर रहे हैं कि यूजर के पास एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमने कि आपको एक अलाउ नाम का हेडर भेजना है, हमें वैल्यू मिल गई. हम चेक कर रहे हैं कि इसका वैल्यू नल तो नहीं है. नल है मतलब किसी ने अलाउ नाम का हेडर भेजा ही नहीं. और अगर ये हेडर
का जो वैल्यू है टेस्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, HRES डॉट सेट स्टेटस HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स डॉट SC डॉट बैड रिक्वेस्ट, ये एक स्टेटस कोड हमने सेट कर दिया। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आफ्टर सेटिंग द स्टेटस आई एम थ्रोइंग वन एक्सेप्शन एज वेल, थ्रो न्यू बैड क्रेडेंशियल एक्सेप्शन। हेडर शुड कंटेन अ की एज अलाउड एंड द वैल्यू शुड नॉट बी टेस्ट। अगर किसी ने हेडर इसका भेजा ही नहीं या फिर उसमें जो वैल्यू है वो टेस्ट है, तो स्टेटस कोड 40041 सेट हो जाएगा, बैड रिक्वेस्ट 400 and it will throw an exception. Make sense? What is the meaning of this logic? Please confirm. Okay. Now अगर ये कंडीशन सही है, मतलब उसने अलाउ नाम का हेडर भेजा है और टेस्ट उसका वैल्यू नहीं है, कुछ और है, मतलब कंट्रोल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, चेन डॉट डू फिल्टर, ये चेन कहां से हम ले रहे हैं, दैट इज द थर्ड पैरामीटर, चेन डॉट डू फिल्टर, आई एम कॉलिंग अ डू फिल्टर मेथड। इससे क्या होगा, कोई बताए, once this line will be executed, apply your common sense and tell me that what will happen. Chain dot do filter, I am passing this request and response, it will forward that to the next filter. ये कह रहा है कि अब हमारा काम हो गया, अब हम रिक्वेस्ट हमारे अगले फिल्टर को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई अगला फिल्टर है तो वो ले ले, और अगर कोई अगला फिल्टर नहीं है तो डायरेक्ट सर्वलेट के पास चला जाए। डज इट मेक सेंस? लेकिन अगर हमारा लॉजिक गड़बड़ हुआ कुछ, तो ये यहीं से इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन while setting that status code as well. Cool. I hope everybody got the point here. Please confirm. Very good. Now let's test this whether it's working or not. So अब ये filter तो बन गया, लेकिन इसे filter को हमें add करना पड़ेगा, right? So let's see that here the same example is mentioned there in your notes also. Now what we need to do, we need to apply this custom filter inside our Spring Security configuration flow. अब हमारे जो filter के flow है उसमें हमें add करना होगा। कहाँ पे करेंगे इसे? So here see that I have add filter before basic authentication filter, कि जब ये authentication हो ना, उसके ठीक पहले ये filter हमारा चेक हो जाए, authentication होने के पहले ही चेक हो। So I just need to add this filter before our basic authentication filter. ये basic authentication filter करता क्या है, आप जब यूजर नेम पासवर्ड पास करते हो ना auth, और उससे हम, तो वहीं पे वो हमारा वैलिड करता है, and it will create the authentication object and do the further processing, call the authentication manager, and authentication manager will call the authentication provider and storage goes ahead. So ठीक ये authentication होने के ठीक पहले this filter should be executed. Does it make sense? So let's see that and configure this filter in our security filter chain. That is here our app configuration, and inside this you can apply dot add filter. You'll see that there are add filter, add, after, before. So I'm saying that before, new request validation filter, इसका ऑब्जेक्ट, और किस फिल्टर के ठीक पहले हम लगाना चाहते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर dot class. We will see Nitish. Just let's focus one by one. So this is the way how exactly I have added this filter. Now let me save this file and let's run the example once again. Now you can see that in your console, our request, हमने जो filter का नाम बनाया था, क्या नाम था उसका, request validation filter. अभी आप यहाँ पे कंसोल पे, एक्चुअली एग्जांपल में हमने ऐड कर रखा है ऑलरेडी, कॉपी पेस्टेड एग्जांपल है। सो आई गेस तो डिबग वाला ऑप्शन हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे, लेट मी चेक। No, I have not added. So let me stop this application and add this couple of things. Enable web security.
This is not required in your application. This is for only demonstration. कि आपके कौन कौन से फिल्टर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आपके अपने एप्लीकेशन में ये एनोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है. Now let me relaunch once again this application. And let's try to keep the request here. So I'm trying to do the sign in. This time I'm going to do the sign in. So let's do that here. Pass the proper username and password to the header ram@gmail.com. And let's see that, give the request. This time it is saying 400 bad request, even though my username password is correct. 400 bad request. कुछ HTML में response भी मिला है, लेकिन ये response आप अगर ध्यान से देखो तो header should contain key as allow and value should not be text. तो अब ये रिक्वेस्ट को पास करने के लिए हमें रिक्वेस्ट हेडर पे जाना पड़ेगा और एक मैनुअली एक हेडर लिखना पड़ेगा. वो क्या होगा? अलाउ वैल्यू शुड नॉट बी टेस्ट. अगर हम टेस्ट लिख के भेजे फिर भी हमें यही एक्सेप्शन मिलेगी. लेकिन अगर हम इसको टेस्ट का नाम बदल दे, कुछ रैंडम वैल्यू दे दे, नाउ इट शुड बी लॉग्ड इन सक्सेसफुली. And you can see that in your console as well. Request validator filter, validation filter is applied just before basic authentication filter. Make sense? Please confirm. Cool. अगर ये filter हम value ना दे यहाँ पे तो क्या होगा? It will not gonna work because यहाँ पे हमने filter जो लिख रखा है, अगर कोई filter का value नहीं देगा इस नाम से, allow नाम से, सॉरी हेडर अलाउ नाम से, तो ये वैल्यू नल आएगी यहाँ पे. इसका मतलब किसी ने वो हेडर भेजा ही नहीं. तो अब आपको समझ में आ गया ये अलाउ क्या है. आप इस कोई भी वर्ड ले सकते हो यहाँ पे, माई टेस्ट और वट एवर. द प्योर पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल इज वॉट, कि हम किस तरह रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं और रिक्वेस्ट में हमारी मन चाहिए चीजें अगर ना हो तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करके रिक्वेस्ट को स्टॉप कर दें यहाँ पे, और वो चीजें सही है अगर तो हम आगे बढ़ा दें उस फिल्टर को. Suryakant is asking, sir, what is the need of this filter when we use this to use? Suryakant, we are not going to use this type of filter. This is the only example to demonstrate that कि what is the role of the filter और ये add filter हम क्यों करते हैं. ये हम क्यों time waste कर रहे हैं इतना इस filter के ऊपर? Because to learn about the JWT, we have to use this type of filter in much more easier way. अभी I guess you got the clarity कि filter का काम क्या है. हमने किस तरह से request को intercept किया है और हमारी मन चाहिए चीजें हम देख रहे हैं वहां पे वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है. अगर नहीं आ रही है तो हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, अदरवाइज फिल्टर को हमने आगे बढ़ा दिया. मेक सेंस? और इस फिल्टर को किस तरह हमने अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर लिया है. आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. प्लीज कंफर्म. हेलो, स्टिल एनीवन हैविंग एनी डाउट? प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स. Okay, so this is the first filter we have created. Now the next one, this is the custom filter add before हमने देख लिया है यहाँ पे request validation filter. एक और filter बनाते हैं, then you will get the clarity. ये filter हम कैसे add करेंगे, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे लिख रखा है. This is already added. Okay, now here from the UI app or from the client app, we should catch the 400 error and show that end user like that कि hey user ये 400 एरर आ रहा है. हम वहां पे कैच कर लेंगे एक्सेप्शन को और दिखा देंगे कि यूजर आपके पास क्या मैसेज है, वो मैसेज रीड करके बता देंगे कि आपको क्या करना है. अब फिल्टर में हम क्या नहीं करना चाहिए हमें. वी शुड नॉट राइट एनी रियल बिग बिजनेस लॉजिक विच इन्वॉल्व डेटाबेस इनसाइड द फिल्टर because it will be called for all the requests and will cause the performance issue. This line is a very important. अब ध्यान से समझना है इस बात को. So once we have created this filter like this, since it is Java class here and you can write any kind of Java logic. So inside this filter, we should not write any big business logic. Main business logic लिखने के लिए filter नहीं बने हुए. In fact, you can write, you can create a
load the driver, create the JDBC connection, you can perform all the operation की request के data जो आ रहा है वो हमारे database में है नहीं, we can write that, but it is not recommended. Why? Because filter उसलिए बना ही नहीं है real business logic को deal करने के लिए. Because ये filter हर बार execute होगा. जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी डेटाबेस के कनेक्शन बनेंगे और ये परफॉर्मेंस इशू बन जाएगी. मेन बिजनेस लॉजिक शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड. Even though you can, but it's really bad practice to write a main business logic. The main purpose of the filter is what to intercept the request, validate some data, and do some what filtration. कि हम रिक्वेस्ट को थोड़ा फिल्टर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, फिल्टर. मेक सेंस? रिक्वेस्ट को नो डाउट हैंडल करेगा हमारा सर्वलेट, लेकिन उसके पहले कुछ अगर थोड़ी सी फिल्ट्रेशन की जरूरत हो तो हम यहाँ पे फिल्टर में वो चीज कर सकते हैं. अब ये फिल्ट्रेशन का ये मतलब कभी नहीं है कि हम इसमें सारे बिजनेस लॉजिक उठा के डाल दें. इट्स नॉट लाइक दैट. हर बार रिक्वेस्ट आएगी ये फिल्टर ही हमारा एग्जीक्यूट करता रहेगा एंड इट विल कॉज द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स ट्राई टू राइट वन अदर फिल्टर. ये फिल्टर हम कहाँ यूज करेंगे? सर इफ यू अप्लाई मोर फिल्टर will it affect our response speed like latency etc? Yes, of course that. That's why the filter, that means of course you think logically ना, अगर हम 10-15 फिल्टर लिख लिए तो सर्वर के पास रिस्पॉन्स जाने के पहले 10-15 फिल्टर से होकर गुजरना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई वी शुड नॉट राइट आवर रियल बिजनेस लॉजिक. स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने क्या कर रखा है, उसमें आपके CSRF इंप्लीमेंट है या नहीं, कॉर्स इंप्लीमेंट है या नहीं, यूजर नेम पासवर्ड सही से आ रहा है या नहीं. सो ऑल दोस थिंग्स, लॉगिन पेज को जनरेट करना, लॉग आउट पेज को जनरेट करना, ये सारे फिल्टर से ही उन्होंने कर रखा है. तभी तो हम जब ब्राउजर से एक्सेस करते हैं अपने रिस्ट्रिक्टेड एपीआई को तो हमें लॉगिन पेज मिल जाता है. ये पेज कौन जनरेट कर रहा है? फिल्टर. कोई ना कोई फिल्टर होगा, उसके पास रिक्वेस्ट आ रही है, वो हमें पेज हमें जनरेट करके दे देता है जहां पे हम यूजर नेम पासवर्ड पास करते हैं. नाउ एडिंग ए कस्टम फिल्टर, हम एक और फिल्टर बनाते हैं और वो फिल्टर हम ऐड फिल्टर आफ्टर यूज करेंगे. ऐड फिल्टर आफ्टर मतलब जब हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद. तो यहाँ पे क्या करें, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम बिजनेस लॉजिक जस्ट आफ्टर ऑथेंटिकेशन गेट्स कंप्लीटेड. यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा है बट इसका ये मतलब नहीं है कि वी शुड राइट द रियल बिजनेस लॉजिक इन आवर फिल्टर, विच इज द नॉर्मल बिजनेस. दैट मीन्स कुछ डेकोरेशन वाली चीजें. रिस्पॉन्स हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर कंप्लीट अपना काम कर दिया उसने, ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली, बट आफ्टर दैट रिस्पॉन्स इज कमिंग, आई वांट टू अप्लाई सम अदर टाइप, जस्ट लाइक यस सूर्यकांत वेलकम टाइप. So if you want to execute that one well business logic just after authentication get completed, here we add a filter just after authentication to write a logger about successful authentication and authorities details of the logged in user. Just like that Suryakant told welcome type message. जैसे यूजर हमारा लॉग्ड इन हो जाए, ये हमारा फिल्टर क्या करे, एक सर्वर कंसोल पे एक लॉग मैसेज प्रिंट कर दे उस यूजर के बारे में और उसकी अथॉरिटीज के बारे में. Let's create this filter. So क्या करना है, इसे फिल्टर का नाम हमारा रहेगा, you can give any name. So I'm creating another filter. Please stop this application. It will also do the similar kind of thing. Implement servlet filter. Sorry, not servlet filter, implement filter. And override this method, that is toFilter method. Like this. Okay, so यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम लिखेंगे? So let me just copy paste some statement over here. So first of all, if you are using, we have already know that what is a logger. So I'm just copying this statement because log related API is already there in our application. If you are using the SLF4J तो ये मेरे लिए और भी आसान हो जाएगा. So पहले तो हम ये SLF4J का logger ले लेते हैं यहाँ से. So log factory dot get logger और इस class का हमने एक logger ले लिया है using the log. You know that you are very well known with this particular statement. In our logging session we discussed about that. You need to take a logger, then only you can log some message. लेकिन अगर आप लॉन्गबुक यूज कर रखे हो तो डायरेक्टली आप SLF4J एनोटेशन लगा दो, आपका काम हो जाएगा. You need not take this statement. Am I clear? Anyone having any doubt with this statement? Please confirm. Good. Now I'm going to do some logic here. Just copy paste.
ध्यान से समझना करना क्या है। ये फिल्टर हम कहाँ लगाने वाले हैं? ऑथेंटिकेशन के बाद, जब हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए। वंस द ऑथेंटिकेशन गेट सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या? उसके सारे डिटेल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट में होंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से यहाँ पे उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया, वी गेट द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड हियर वी कॉल द ऑथेंटिकेशन, गेट ऑथेंटिकेशन, वी गॉट आवर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। ये वो ऑथेंटिकेशन है जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स दिस इज द सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। एम आई करेक्ट? प्लीज कंफर्म। क्यों सर, क्यों ये सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होगा? क्योंकि ये फिल्टर कब एग्जीक्यूट होगा? आफ्टर ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल। हम उसे वहां पे लगाने वाले हैं। मतलब ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये जो ऑब्जेक्ट मिलेगा ये हमारा सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म। नाउ आई एम सेइंग दैट इफ ऑथ नॉट इक्वल टू नल, मतलब ये अगर नल नहीं है, मतलब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट आ चुका है, सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तब क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ लॉग डॉट इन्फो, हम एक इन्फो नाम का एक मैसेज वहां पे प्रिंट कर रहे हैं, लेबल यूजर ऑथ डॉट गेट नेम, जो भी उसका नाम होगा, इज सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड एंड द अथॉरिटीज आर ऑथ डॉट गेट अथॉरिटीज। ये सारे अथॉरिटीज उसके प्रिंट हो जाएंगे, उसकी क्या क्या अथॉरिटीज है, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, फिल्टर डॉट चेन डॉट डू फिल्टर, मतलब ये कंट्रोल हमारा आगे की तरफ बढ़ जाएगा। कोई इसके बाद वाला फिल्टर हो या फिर डायरेक्ट रिस्पॉन्स के पास जाना हो, इट विल गो देयर। Anyone having any difficulty to understand this statement? Please confirm. Cool. So ये फिल्टर बन गया है। अब इसे हमें कहाँ पे अप्लाई करना है? दिस फिल्टर का नाम है ऑथोरिटीज लॉगिंग फिल्टर आफ्टर फिल्टर। इस फिल्टर को हमें अप्लाई कहाँ पे करना है? बेसिक ऑथेंटिकेशन के ठीक बाद, जब ऑथेंटिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इन दैट केस डॉट एड फिल्टर आफ्टर न्यू authorities logging filter after filter, and here basic authentication filter dot class. Over. Sir, where to use? What I am not getting. संजय, just hold on, be with me, you will get the idea कि हमें यूज कहाँ करना है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये फिल्टर बाद में या पीछे यूज करना। We will just get the idea। पहले आप ये समझ जाए कि फिल्टर हम बनाते कैसे हैं और सिक्योरिटी, अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी के फ्लो में उसे हम ऐड कैसे करते हैं। अब इसे यूज कहाँ पे करना है, we will see that। Make sense? Please confirm. Good. So let's save this example and now let's run this example. So application got started. Now I'm trying to log in. Here पे हमें allow देना पड़ेगा and this value should not be test because पिछला वाला filter भी activated. And then I'm trying to do the signing. So here you will notice Ram logged in successfully. That's fine. लेकिन जो log message हमने लिखा वो कहाँ पे print होगा? Console पे. So let's see that in a console. So here you will notice. First, let's see that हमारा filter ऐड हुआ या नहीं। ये बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले एक फिल्टर हमने लगा रखा था और बाद में भी ये फिल्टर हमारा एप्लीकेबल ऐड हो चुका है। एंड सी दैट इन अ लॉग। सो लॉग के अंदर आपका आएगा यहाँ पे डिटेल्स। वंस द ऑथेंटिकेशन इज डन, हियर इट इज। कौन सा फिल्टर से मैसेज आ रहा है? लेट्स सी दैट authorities logging after filter, and here this is your log message. User ram@gmail is successfully authenticated and has authorities role_admin. That means this filter is also working properly. ठीक है, तो हमने अब तक दो फिल्टर हमने ऐड किए हैं और सिली हमने एग्जांपल, एक में छोटा सा रिक्वेस्ट का हमने टेस्ट किया था कि रिक्वेस्ट में ये वैल्यू आ रही है नहीं, और दूसरे हमने आफ्टर में यूज किया है कि वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन के वैल्यू को हम कंसोल पे लॉग कर दें। ओके, वी हैव नॉट रिटन एनी बिग एग्जांपल।
और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वी हैव सीन दैट। अब एडिंग ए कस्टम फिल्टर यूजिंग एड फिल्टर एट हमें किस पोजीशन पे ऐड करना है। तो अब ये पोजीशन पे जब हम ऐड करेंगे ना, सो इट विल नॉट गोइंग टू ऐड रिमूव द दैट पर्टिकुलर पोजीशन, उस फिल्टर को ये रिमूव नहीं करेगा, बल्कि उसी के कभी आगे या कभी पीछे ऐड कर सकता है। सो it adds a filter at the location of the specified filter class, but the order of the execution can't be guaranteed. It will not replace the filter already presented at the same order. Since we will not have control on the order of the filter and it is random in nature, we should avoid providing this filter at the same order. बहुत केस में इसे हम avoid कर देते हैं. We mostly use before and after. So the example is here I have created one other filter class that is logging filter at. अब ये कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ पे भी हमने एक लॉग मैसेज लगा रखा है लॉगर, और ये लॉग मैसेज क्या है, सिर्फ ये सिंपली प्रिंट करना ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस, दैट्स इट। एक छोटा सा मैंने हमने लॉग मैसेज दे दिया है कि ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन इज इन प्रोग्रेस। अब ये कहीं पे भी एग्जीक्यूट हो, उसके पहले ऑथेंटिकेशन के पहले या फिर बाद में, इट इज इन द प्रोग्रेस। एंड देन व्हाट वी डिड, वी जस्ट एडेड दिस फिल्टर हियर, ऐड फिल्टर एट। तो हमने वो पुराने वाले फिल्टर को हटा दिया था, लॉगिंग ऑथेंटिकेशन वाला फिल्टर को, जो अभी हमने ऐड किया हुआ है, दैट इज दिस वन, ऐड फिल्टर आफ्टर। इसकी जगह पे हमने ऐड फिल्टर एट यूज करके इसी फिल्टर को रिप्लेस करके हमने अपना ये वाला फिल्टर जो नया वाला है उसे पिक कर दिया, लॉगिंग फिल्टर एट। यहाँ पे द रीजन इज ऑल्सो मेंशन देयर, अपार्ट दैट इज हियर, configure this filter in the filters flow. So this filter before, this filter after, and add filter add. So it is logging filter add. Let me just do that one here instead, so we get the clarity. The filter की बना ही लेते हैं, it will be easy for you to understand. So create a class. Class का नाम क्या है? Logging filter add. And this filter, just copy paste. Done. Now, okay, close one more bracket. And this filter I'm going to add in our config, that is dot add filter add new logging filter add और बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास में आप इसे ऐड कर दें। अब ये इसे रिप्लेस नहीं करेगा कि डोंट थिंक लाइक दैट कि ऐड मतलब इसे रिप्लेस करके हमारा फिल्टर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ये इसके आसपास में रैंडमली इट इज द नेचर, यू कांट गारंटी दैट कि कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। And let's save this one. Let's try to execute this example once again. And try to sign in with this allow and this value. It is logged in. Now let's see that in a console, but before that, you will see that this series. So basic authentication के ठीक पहले ही हमारा execute हो रहा है, कभी हो सकता है कि बाद में भी execute हो, we can't guarantee that one कि कहाँ पे execute होगा। And here you can notice this value is also logged in properly. So authentication validation is in progress. So we have seen that all these filters we have applied on a different position. Okay, now let's talk about that, some other concept about this. So here if you'll notice, apart from implementing the filter interface, there are some other advanced concepts are also available when we try to implement a custom filter of Spring Security. मतलब ये filter interface को हमने implement कर सकते हैं, logic लिख सकते हैं, we can do that one, we have done. But if you want to do some other type of advanced concept, if you want to apply, which is related to the security, that time we can use what? We can try to implement the custom filters in the Spring Security. Spring Security वाले ने दो हमारे पास क्लास दे रखी है, generic filter bean
and once per request filter. These two filters are there. ये दोनों फिल्टर है क्या सर? ये जेनरिक फिल्टर बीन की पहले बात करते हैं. दिस इज द सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फिल्टर इंटरफेस. स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने एक अपना फिल्टर बना रखा है क्लास जेनरिक फिल्टर बीन. उन्होंने इस फिल्टर को इंप्लीमेंट कर रखा है. दे हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड दैट एंड इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. दैट मींस इसका डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. यू नीड टू create the object of its child class. Till this point, is it okay? Please confirm. What is this generic filter bean? It is already implemented filter in a Spring Security. ये फिल्टर को ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है. इसमें एक क्लास बना रखा है Spring Security में. Please confirm. Is it okay? Till this point? Okay. Now, the main advantage of this class is what? It is going to provide all the details of our config parameters, init parameters, servlet context parameter, which we have configured inside the servlet configuration file, web.xml file. So inside our custom filter, we can, if you want, all the details of our init config context parameter, then we can use in this abstract class. यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आप चूंकि हमने सर्वलेट नहीं पढ़ा है तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर में समझ में ना आए. बेसिकली ये फिल्टर क्या है ना कि इसके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन डिटेल मिल जाएंगे. जब हम सर्वलेट के क्लासेस बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है इनिट पैरामीटर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए. हमारे पास एक फाइल होती है web.xml. अगर उन सारे क्या भाई डिटेल चाहिए आपको तो ये नॉर्मल फिल्टर वाले क्लास में नहीं मिलेगा आपको. लेकिन स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने ये सारे डिटेल्स को इस क्लास के अंदर एक्सपोज कर रखा है. यू हैव एक्सेस ऑफ दिस वन, ऑल द डिटेल्स. You can get the details of those configuration also which we have done in your servlet class creation time. Okay, मतलब आप ये समझो कि एक सिंपल सा एक फिल्टर क्लास है ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड जिसमें सर्वलेट से रिलेटेड और भी डिटेल हमें मिल जाएंगे. init parameters, servlet context. I cannot show those example right away. In your revision batch, I will try to execute show one servlet example, manual servlet creation. That time you will understand that what is the init parameters, servlet context parameter. तो मतलब सर्वलेट से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन है उनकी डिटेल आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगी. ये क्लास स्प्रिंग सिक्योरिटी वालों ने बना रखा है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है. ओके, नाउ उसके बाद आता है क्या वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, जिसका हम यूज करते हैं अपने सिक्योरिटी मतलब अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी में. सर व्हाट इज दिस क्लास? दिस क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ दिस वन. ये इसी का चाइल्ड क्लास है और ये ज्यादा पावरफुल क्लास है इस क्लास के मुकाबले. And it is recommended to use this class only in our project. Once per request filter. ध्यान से सुनना, ये फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट है. It is a child class of generic filter B. ये इस क्लास का चाइल्ड क्लास है तो इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही फैसिलिटी होंगी. इसके तो सारे फैसिलिटी मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें और भी कुछ फैसिलिटी है. वो क्या है? लिसन हियर. पहली बात कि पहले ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब इसका आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. यू नीड टू एक्सटेंड दिस क्लास एंड यू हैव टू क्रिएट योर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट. Now, whenever we create the custom filter, by default, Spring Security Framework cannot guarantee that it will execute only one time per request. अभी जो ये फिल्टर हमने बनाए हैं ना, जो अभी जो नॉर्मल फिल्टर हमने बना रखे थे, चाहे वो आपका लॉगिंग फिल्टर हो या फिर रिक्वेस्ट वैलिडेशन फिल्टर हो. So this filter we know that it will execute before servlet request will be, but it will not guarantee कि ये फिल्टर एक ही बार एग्जीक्यूट होगा. कभी कभी क्या होता है कि हम 2-3 सर्वलेट को आपस में चेंज कर देते कि रिक्वेस्ट एक सर्वलेट पे जाए, वो सर्वलेट दूसरे को फॉरवर्ड कर दे. तो उस केस में क्या होते हैं कि वो फिल्टर 2-3 बार एग्जीक्यूट हो सकता है. देयर माइट बी सम सिनेरियो इफ मल्टीपल सर्वलेट्स आर इंटरनली फॉरवर्डिंग द कंट्रोल एंड then the same filter might be executed if it is configured multiple times. So see here, there might be a scenario where our servlet container invoke the same filter multiple times for various reasons. Come, if one servlet may forward the request to another servlet, and the same filter is configured with the both the filters. So, दोनों सर्वलेट्स के साथ अगर ये फिल्टर आपका कॉन्फ़िगर्ड है, तो हो सकता है कि वो दोनों सर्वलेट के लिए आपके फिल्टर को एग्जीक्यूट कर दे. इन दैट केस हमारे फिल्टर में मतलब कहने का मतलब है कि ये फिल्टर के चांसेस है कि 2 बार भी एग्जीक्यूट हो सकता है. कब अगर हम 2-3 सर्वलेट लिखे हैं अपने क्लास के अंदर और दोनों सर्वलेट में ये फिल्टर हमारे कॉन्फ़िगर हो, तो दोनों सर्वलेट के लिए फिल्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारा फिल्टर एक ही बार एग्जीक्यूट हो, राइट,
But if you want to make sure that our custom filter need to be executed once, only once per request at any cost, then we should define our custom filter by extending this abstract class. मतलब अब ये कहता है कि हमारा स्ट्रिंग सिक्योरिटी वाला फिल्टर है, आप अगर चाहते हो कि हर हाल में आपका फिल्टर सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो एट एनी कॉस्ट, देन डोंट यूज द ट्रेडिशनल फिल्टर इंटरफेस, आप हमारे क्लास को एक्सटेंड करिए। इसका नाम ही है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। ये किसी भी हाल में 2 बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हमारा फिल्टर क्या है, चांसेस है कि 2 बार एग्जीक्यूट हो जाए। सर कब 2 बार एग्जीक्यूट होगा? हो सकता है कि 2-3 सर्वलेट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो और वो फिल्टर 2-3 सर्वलेट के साथ कॉन्फ़िगर हो, right? I cannot show that how the servlet will internally communicate with other servlet right away, because the time consuming process it will take to understand the entire servlet flow. बस अभी के लिए ये समझना है कि नॉर्मल सर्वलेट फिल्टर हो सकता है कि मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, but if you are sure that कि only one time to execute a particular filter, we should use this particular filter, once per request filter, instead of using traditional filter. And it is a child of generic filter bean class, जिसके अंदर हमारे पास सर्वलेट के और डिटेल्स को एक्सेस करने की पावर है। Am I clear? Please confirm. हेलो, अब इस फिल्टर में क्या है ना कि इसमें ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसके अंदर एक मेथड भी हमारे पास है। तो पुराने वाले फिल्टर में हम क्या करते थे, डू फिल्टर हम इसे एग्जीक्यूट करते थे। वी हैव टू ओवरराइड द डू फिल्टर मेथड। सो जस्ट सी दैट हियर हमारे फिल्टर में डू फिल्टर मेथड को हम ओवरराइड करते थे। इसके अंदर 2-3 पैरामीटर थे, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पांस, फिल्टर चेन। लेकिन अगर आप इस फिल्टर का यूज करोगे, वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, इट इज सेइंग दैट डोंट यूज डू फिल्टर मेथड, इट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड। इसको इसने इंप्लीमेंट कर दिया है इस क्लास में। और आपके लिए एक मेथड दे रखा है, कौन सा, डू फिल्टर इंटरनल। प्लीज ओवरराइड दिस मेथड, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये आपके लिए छोड़ दिया गया। तो इस क्लास ने क्या किया है, व्हाट दिस क्लास इज डन has done, it has implemented this do filter method. It is already mentioned that in this method if our filter is already executed or not. इसके अंदर ये लॉजिक लिखा हुआ है कि ये फिल्टर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। If it is already executed, then simply it will call the filter chain by skipping our custom filter. Or this class has given us this method do filter internal, mean to say that अब अगला जो हम फिल्टर बनाएंगे वो फिल्टर हम वंस पर रिक्वेस्ट को एक्सटेंड करके बनाएंगे और उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं डू फिल्टर इंटरनल। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो बदल गया है। जो हम डाउनकास्ट कर रहे थे, क्या अब यहाँ डाउनकास्ट करने की जरूरत है? नहीं। वहां पे सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पांस था, यहाँ पे एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस। मेक सेंस? प्लीज कंफर्म। So now we need to create in a Spring Security. It's a blind rule. If you want to create a custom filter, always go for this filter, once per request filter. It is internally using your filter only, but you need to write some other logic also, and it will give the guarantee that ये filter it will execute only one time in the whole life of your system. 2 बार ये filter execute होने का कोई chance नहीं। And we need to override this method, do filter internal. So inside this filter class there is another method, एक और मेथड है हमारे पास इस क्लास के अंदर, उससे भी हमें ओवरराइड करना है। और उस मेथड का नाम है बूलियन रिटर्न टाइप शुड नॉट फिल्टर। उस मेथड का नाम क्या है? शुड नॉट फिल्टर। दैट मेथड आल्सो वी नीड टू ओवरराइड। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल, देन यू विल गेट द क्लैरिटी। सो हियर वेयर वी कैन डिफाइन द लॉजिक, where we define the logic that the custom filter should execute or should not execute for some API path. If you run put and get request, it will run for first time only. Yes, let's see that one here. Basically this should not filter, इसके अंदर एक और मेथड है, that means this method you need to override। साथ साथ ये एक मेथड है, इसे भी हम ओवरराइड करके, this is not an abstract method by the way, so इस मेथड को ओवरराइड करके हम ये बता सकते हैं कि ये फिल्टर किस पाथ के लिए ही एग्जीक्यूट हो। मतलब फिल्टर तो सारे रिक्वेस्ट के लिए एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन इस फिल्टर के साथ हमारे पास एक फैसिलिटी ये भी है कि हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ठीक है ये सर्वलेट के लिए एग्जीक्यूट होगा, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक पाथ के लिए, स्पेसिफिक एपीआई के लिए ही एग्जीक्यूट, दूसरे एपीआई के लिए एग्जीक्यूट ही ना हो। तो दैट मीन्स
facility we have with this particular filter. So we can define this using this method, should not filter. So our basic authentication filter internally extend this once per request filter class only. जितने भी Spring Security में filter लगे हुए हैं प्राय के प्राय यही class यूज करते हैं. And we should also create our filter by using this class. And this class, this once per request filter is basically mostly used in our JWT token case when we are going to learn the JWT token. So in a nutshell, why we are discussing about this filter, कहाँ पे हम apply करें और कौन सा filter हमें use करना चाहिए, what is the purpose of should not filter, to just land on the JWT token part. JWT token में इन filter की जरूरत पड़ेगी हमें और इन्हीं filter के through हम अपने token का validation, token का creation हम confirm करेंगे. Does it make sense? Please confirm. So in order to get that your entire clarity about ये filter कैसे हमारे token में कैसे काम होते हैं, जो आपको last class में समझ में नहीं आया था जब हम CSRF use कर रहे थे, that's why we have expended too much time over here. Here's the time of a small break. After the break, I will show that one of the example that means किसी previous filter को हम change करके once per request filter use करेंगे और उसकी facility के बारे में देखेंगे, and then we will see that example of JWT token. So it is the time of 10, going to be 10:20. So this is it will be a very short break. So we'll come back by 10:25 because we need to discuss lots of things. Is it okay? Please confirm. Okay, welcome back. So let me just go through this example so you'll get much more clarity about that. So I'm creating one class called custom once per request filter. और इस फिल्टर में भी वही होगा, हम ऑथेंटिकेटेड यूजर को लॉक करेंगे कंसोल पे, लेकिन इस बार हम फिल्टर क्लास का यूज नहीं करेंगे बल्कि वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर का हम यूज करेंगे. So let me create this class in custom once per request filter class. And see the difference here. Listen, those students, they got the clear idea. They will only enjoy this JWT token जब हम वहाँ पे use करेंगे इस filter को, तो आपको काफी चीजें clear हो जाएंगी. Otherwise, you will again get face the problem here. So please concentrate this topic here. Let us stop this server. Create a class. Yes. इस बार हमें implement करना है filter interface को extend करना है किस class को once per request filter. This is an abstract class, that's why we need to override one method. So put the cursor and override a method. So यहाँ पे एक abstract method है जो कि mandatory है इसे override करना है. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, we need to write define our logic. Same logic जो हमने यहाँ पे लिख रखा था. That means जो हम user को login कर रहे थे ना यहाँ पे, same logic हम copy. And by the way, we need to take this logger as well. लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये लॉगर इस क्लास का लॉगर हमें लेना है like this. And same thing I have written like this. And here it is filter chain. Check what is the name. It is filter chain. बस वेरिएबल का नाम बदल देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल हमने नीचे यूज किया है फिल्टर चेन डॉट फिल्टर. मतलब पुराना वाला जो ये हमारा ऑथोरिटीज लॉगिंग फिल्टर था ना हमारा, जिसमें हम यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड जो हम फिल्टर नाम से बना रहे थे, इस बार हमने क्या किया यहाँ पे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर यूज कर सकते हैं. आप दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हो यहाँ पे. दिस इज हियर आई हैव यूज्ड दिस सर्वलेट के फिल्टर इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया है हमने और डू फिल्टर मेथड को ओवरराइड किया है. इसके पैरामीटर है रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पांस एंड फिल्टर चेन. वहीं पे ये जो कस्टम वंस पर रिक्वेस्ट ये क्लास है, इसे हमने एक्सटेंड किया है और इसका जो मेथड का नाम है वो है डू फिल्टर इंटरनल, क्योंकि इस क्लास ने डू फिल्टर मेथड को पहले से ही ओवरराइड कर रखा है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड छोड़ रखा है हमारे लिए.
और पैरामीटर आप कंपेयर करो, दिस इज द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, मतलब ये इससे ज्यादा पावरफुल है, आपको डाउनकास्ट करने की जरूरत नहीं, यू कैन गेट द हेडर इंफॉर्मेशन और द एक्स्ट्रा डिटेल्स एज वेल, मेक सेंस, बाकी सारी डिटेल्स सेम। अब इस फिल्टर के साथ एक और फैसिलिटी क्या है, दैट इज अ यूनिक वन, that is a unique one you can do. What is that? You can override another method here, extra method. वो abstract method नहीं है, there is one extra method, that is what? Should not filter. Should not filter, there is one method. So this method you can override. Now this should not filter method क्या करता है ये? This filter will stop you. ये हमें privilege देता है कि ये filter आप किस API के लिए applicable कर रहे हो और किस API के लिए नहीं कर रहे हो। मतलब फिल्टर तो सर्वलेट के पास जाने से पहले काम करेगा, लेकिन पिछला वाला जो फिल्टर था वो किसी भी रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो आप स्लैश कस्टमर के लिए करो या फिर स्लैश लॉगिन के लिए करो, सबके लिए वो फिल्टर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यू कैन रिस्ट्रिक्ट दैट कि ये फिल्टर जो एप्लीकेबल हो सिर्फ किसी एक एपीआई के लिए हो या किसी एपीआई के लिए ना हो। इन दिस मेथड यू कैन डिफाइन should not filter. You need to override this method and you need to write your logic. So let me just show that. Here it is. So I'm just, let me define this logic here. So this is a request. So I'm saying that, let me just remove this negation. Request dot get servlet path dot equals sign in. हम कह रहे हैं कि should not filter. जब भी ये sign in API कोई कॉल करे तो ये फिल्टर एप्लीकेबल ना हो, ठीक है, ये फिल्टर एप्लीकेबल ना हो, दैट इज should not filter when this sign in is there. When the API is what? Slash sign in, this filter should not be applicable. और अगर हमने यहाँ पे नॉट सिंबल लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताओ? It should be applied for what? Only for this filter. Only for this filter, that means what? Only apply this filter for the sign in endpoint. For remaining all the endpoint, it will not filter. Make sense? It will be applicable only for sign in, लेकिन बाकी वालों सब के लिए ये filter applicable नहीं होगा. I hope you got the point here, right? So if I just don't use a not, that means boolean should not filter. जैसे ये API path हम sign in करेंगे तो ये filter हमारा काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने not लगा दिया, इसका मतलब अब ये sign in पे ही काम करे, दूसरे के लिए काम ना करे. I hope everyone got the point here. Please confirm. So this facility is also not there in your normal filter. It is applicable. This facility is there in your once per request filter only. This is the extra method. If you wish to restrict that this filter should be applicable for only those particular paths, you can override this method optionally and you can configure this like this. Otherwise, if you don't require, आप चाहते हो सबके लिए काम करे, then no need to override this method. It is not an abstract method. You can just implement this method and that's it. Does it make sense? Please confirm. Cool. Now what to do? Just replace the above filter with logging after filter inside the application config of previous example. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इस फिल्टर को रिप्लेस कर दे रहे हैं. कस्टम वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर ये नाम है ना इसका. तो इसे हम कॉपी करते हैं और ऐप कॉन्फिग के अंदर ऑथोरिटीज लॉगिंग फिल्टर, इसकी जगह हम अपना फिल्टर लगा देते हैं इसमें. मतलब आफ्टर बेसिक ऑथेंटिकेशन हमारा ये फिल्टर एक्टिवेट हो जाए. और ये फिल्टर कब काम करेगा? सिर्फ साइन इन के लिए काम करेगा, दूसरे किसी एंड पॉइंट के लिए काम नहीं करेगा. कब काम करेगा? बेसिक ऑथेंटिकेशन होने के बाद उसके लॉगिन डिटेल्स को लॉक कर देगा. डज इट मेक सेंस? प्लीज कंफर्म. लेट्स सेव दिस एंड रन द एग्जांपल. What is the need of this once per filter in sign in? We will see that. Sudhanshu, just हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, इस एग्जांपल के थ्रू ही जा रहे हैं. आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं.
So my application got started. And now let me give the request here. So if I'm giving sign in, so this time it will work. So let me just run this program and logged in successful. See that console. So on a console, we'll be able to see this messages like this filter got activated. So custom once per request filter. And here it is the message like user and this person is logged in and there what are the details are there. So you can notice here. So this filter is working. सिर्फ sign in के लिए काम कर रहा है, right? But if I try to call, let me just clear the console. अब हम किसी दूसरे एंड पॉइंट को कॉल करें, साइन इन को हम फिर से कॉल करेंगे, तो ये काम करेगा हमारा. एवरी टाइम वी डू द साइन इन and see that in the console, here this line got printed. So this filter is executed, right? लेकिन फिर से क्लियर कंसोल को क्लियर कर रहा है और हम एक किसी प्रोटेक्टेड एपीआई को कॉल कर रहे हैं दूसरे एपीआई को. लाइक लेट्स से दैट आई एम कॉलिंग सिंस इट्स लॉग्ड इन, आई एम कॉलिंग कस्टमर, राइट, ऑल कस्टमर डिटेल्स. तो क्या इसके लिए ये हमारा फिल्टर एप्लीकेबल होगा? No. Let's run this program and here you will able to see that your all customer details that's working fine, but on a console you will notice that filter is not executed. So you can see that this filter is applied in your list but it is not executed. That means here this filter nowhere it is shown. Here it is in the log message. You can notice this filter is not at all executed. Does it make sense? Please confirm. Good. So I hope everyone is comfortable with this once per request filter. What is the use of filter? कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने फिल्टर को और फिल्टर के पोजीशन का क्या काम है और फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर का क्या यूज है और शुड नॉट फिल्टर का क्या काम है. Got it? Good. Now let's see that our start the JWT token. अब इसी फिल्टर का हम यूज करने वाले हैं JWT टोकन के अंदर. और क्यों करेंगे आपको पहले से ही पता होगी ये चीजें. पहले बात कर लेते हैं JWT टोकन के बारे में कि टोकन होता क्या है, कैसे काम करता है. सो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूजिंग JSON वेब टोकन JWT. अब ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता क्या है? Listen carefully. Some theory part and then we will start the practical. Now, as of now, we have used the cookies while calling our API using client. और ये cookie क्या थी? JSON ID. It is randomly generated value. We call them as token. इस JSON ID में जो value था उसे भी हम token ही कहते हैं, but it's called session token, JSON ID token or cookies. Using this token only, our Spring Security Framework do lots of magic. This cookie will be automatically appended by the browser for subsequent request. हमने देख रखा था सारे request के साथ ये cookies append हो जाएगा. And based on this cookies value, our Spring Security is going to do identify whether the user is logged in or not. इसी cookie के through वो हमें identify करता है कि ये cookie user already logged in है या नहीं. And token play a very vital role. What is that here? An important and it is a very important role in authentication and authorization. These things we have already seen that. Now these tokens are very simple in nature and they are not going to help when we develop a complex application like microservices. ये जो JSON ID है ना, इसमें काम तो करता है हमारा नॉर्मल, अब तक यही हम यूज करते आए हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है. पहला लिमिटेशन ये है कि हम इसे माइक्रो सर्विसेज में यूज नहीं कर सकते. सर ये माइक्रो सर्विसेज क्या होता है? इन माइक्रो सर्विसेज मल्टीपल डिफरेंट एप्लीकेशंस विल बी रनिंग ऑन अ डिफरेंट सर्वर. दैट मींस एक ही एप्लीकेशन के छोटे छोटे हिस्से खुद में ही अपने आप में REST API वो जनरेट कर रहा है एंड दे आर डिप्लॉयड ऑन अ डिफरेंट सर्वर and they have the interaction between among them. So this JSON ID is basically tied with what a proper server. जो JSON ID जनरेट होता है ना, ये एक सर्वर के साथ ही टाई अप होता है. दूसरे सर्वर में ये JSON ID एप्लीकेबल ही रही होगी. और माइक्रो सर्विसेज में होता क्या है, आपके एक ही एप्लीकेशन के छोटे छोटे हिस्से अलग अलग सर्वर पे रन करते हैं. मतलब आप एक सर्विस में JSON ID यहाँ पे एक सर्वर का है तो दूसरे सर्वर पे आप कॉल करोगे तो वहां पे वो सेशन ID एप्लीकेबल होगी नहीं. इट विल बी नॉट वैलिडेटेड. तो डिफरेंट
application if they try to communicate in microservices which is running on a different server where this JSON ID will not gonna help you. And that's we need to use the other option in the term of token, generating a token and sharing between what the multiple applications. Because the default token generated by the Spring Security Framework, it will work fine with the smaller application. But if you want to build some enterprise application, this JSON ID will not be sufficient because of two reasons. छोटे छोटे एप्लीकेशन जो अब तक हम बनाते आए हैं, एक नॉर्मल मोनोलिथ एप्लीकेशन अब बनाओ तो उसके लिए JSON ID इज मोर देन एनफ. लेकिन कुछ लिमिटेशन यहाँ पे भी है उसके लिए. एंड अदर लिमिटेशन इज व्हाट, if you want to create your application for a big enterprise application where your application will interact with the multiple different components or multiple different other part of your application which is running on a different server. मतलब माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है ना, अब तक हम जो एप्लीकेशन बनाते आए हैं वो एक ही सर्वर पे रन कर रहे हैं. लेकिन माइक्रो सर्विसेज में आपके एप्लीकेशन के बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि let's say that cart module, let's say that your customer care module, let's say that your loan module. So those modules, they are running on a different server, right? So basically in that scenario your JSON ID will not gonna work. So you have to use the other mechanism, token based method. So main problem क्या होती है token के साथ, JSON ID does not hold any user data. जैसे आपने देखा था JSON ID is a randomly generated value. It is not going to hold any user data कि यूजर का नाम क्या है, यूजर की अथॉरिटी क्या है, क्या ये टोकन में मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा. It is a randomly generated value. This token does not carry any user specific information कि यूजर किस तरह का है, इसके डिटेल्स क्या है. We can't get those type of information on those JSON ID tokens, right? The other problem, just now I talk about that, that means this JSON ID is being shared as a cookie inside our browser and this cookie will be tied to the user session. For some reason, if our end user is not closing the browser and the user session is still valid, then there is a good chance that someone can misuse the token which we stored inside the browser. अगर किसी ने ब्राउजर क्लोज नहीं किया, ये सेशन हमारा वैलिड रहता ही चला जाएगा. कोई दूसरा पर्सन इसे सेशन को एक्टिवेट करके सेशन को निकाल के और अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकता है, right? So some other problems are also there in microservices environment. Also JSON ID is not applicable. So that's why we should explore more advanced option to use the token, to use the authentication and authorization. अब ये token based authentication authorization क्या फायदे हैं और क्या रोल है, roles of token in authentication and authorization. टोकन बेसिकली होता क्या है, जैसे JSON ID की भी एक टोकन ही होती है, वो जो वैल्यू में मिलता है JSON ID में. So a token can be a plain string of format of universally unique identifier, that means UUID, or it can be a type of token. कुछ भी हो सकता है, एक UUID भी आप टोकन कंसीडर कर सकते हो, एक JWT को भी आप टोकन कंसीडर कर सकते हो. Usually we get that generated value when the user get authenticated for the first time during the login. जैसे यूजर पहली बार लॉगिन होगा, एक आपको टोकन मिल जाएगा. टोकन कोई रैंडमली वैल्यू UUID का वैल्यू हो सकता है या फिर JWT का वैल्यू हो जाएगा, मिल जाएगा. On every request to a restricted resource, the client sends this access token to the query string or authorization header. The server then validates the token and if it is valid, it returns the secured resource to the client. But the flow काफी simple है. First, user need to do the authentication. जैसे ही वो यूजर नेम पासवर्ड देके पहले ऑथेंटिकेट हो जाएगा, सिस्टम ने हमारा उसे ऑथेंटिकेट करने के बाद उसे क्या करेगी, सिस्टम एक टोकन दे देगी, हे टेक दिस टोकन. और अगली बार आप कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करो ना, तो इस टोकन को आप भेजो, तभी हम पता कर पाएंगे कि यू आर अ लेजिटिमेट यूजर, राइट? एंड दिस टोकन कुड बी योर JWT token, could be UUID. If you recall, I have shared one example with you in which I have implemented the manual security without Spring Security. Did you get that example? Please confirm. मैंने आप लोगों को स्प्रिंग बूट खत्म होने के बाद स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट होने के फर्स्ट डे पे एक एग्जांपल मैंने शेयर किया हुआ था. वो एग्जांपल था मैनुअली हम सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं विदाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में. उस एप्लीकेशन को अगर आपने रन किया होगा एटलीस्ट, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे हम UUID कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज JWT इज अ पार्ट, इट इज बी यूज्ड इन द आवर स्प्रिंग सिक्योरिटी.
लेकिन हम वहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं, हम वहाँ पे एक यूयूआईडी यूनिक आइडेंटिफायर हम रिलीज कर रहे हैं जैसे यूजर लॉग इन हो जा रहा है. So I recommend everyone to just watch that session recording. Video is also mentioned there. In that authentication, I have just used manually with this UUID. Okay. Advantage क्या है token का? So listen carefully. These are the very that means important point here. So tokens helps us not to share the credential for every request. पहली बात कि user को पहली बार ही अपना credential देना पड़ेगा, बार-बार नहीं. एक बार credential मिल गया उसे token मिल गया. And it is a security risk to send the credential over the network frequently. Just go through this one. So what are the main important point regarding the tokens advantage? Token can be invalidated during the suspicious activities without invalidating the user credential. अगर हमें जहां भी सस्पिशियस एक्टिविटी मालूम चलेगी हम टोकन को वहीं पे इनवैलिडेट कर सकते हैं. हमें फिर से यूजर को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया है, आप अपने पासवर्ड को बदलो या आपका पासवर्ड हमने डिसेबल कर दिया. Right? We just invalidate the token because user will not going to share this username password again and again. He has to send the tokens. Now token can be created in a short lifespan. हम जब token बनाते हैं ना, इसके बहुत ही short lifespan हम रखते हैं. Hardly 5 hours, 6 hours, 2 hours, 1 hour based on our requirement. So 24 hour max to max. And average is just 1 hour you can send. और 1 घंटे के बाद वो token अपने आप invalidate हो जाएगी. We have the provision also, we can invalidate the token. Token can be issued to store the user information also. User की details को भी हम token में store कर सकते हैं, जो कि JSession ID में possible नहीं था. इससे हम reusability we can access. That means we can share many separate servers. We can have many separate servers running on the multiple platform and domain, reusing the same token for authenticating the token. Like from Google, we can navigate to the Google Drive, Map, Photos, or with the same token, it is also known as what SSO, single sign-on. आपने देखा होगा कि जैसे ही हम Google पे हम sign in कर जाते हैं, now we are able to access their Google-related other products like Google Photos, Google Drive. We are able to directly navigate to those applications. It is not like that कि Google जो हम access कर रहे हैं ना, same application, same server Google Drive के लिए भी होगा और Google Map के लिए भी होगा. No, they might have used a different applications. But once you logged in, what will happen? One token will be given to you, and that token will be applicable for their server also. Whether your application is a span or a different modules are running on a different server. Similarly, stateless is also there. That means it is a stateless, easier to scale. The token contains all the information to identify the user, eliminating to need the session state. If you use the load balancer or cluster environment for some application, we can pass the user to any server instead of being bounded to the same server where we logged in. इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अगर आपके एप्लीकेशन अलग-अलग सर्वर पे रन कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन के बहुत सारे अलग-अलग मॉड्यूल, तो ये टोकन हम किसी भी सर्वर पे भेज के हम पता कर सकते हैं कि ये टोकन हमारा लॉग्ड इन यूजर वाला टोकन है या नहीं, वैलिड टोकन है या नहीं. हमें यूजर के सेशन को, स्टेट को मैनेज करने के लिए HTTP सेशन ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. You don't need that thing. Lots of advantages are there. You will see practically. I recommend everyone to just go through this note and read it carefully. You will get that more idea about the JWT token. What is the advantage of JWT token and roles of token in authentication and authorization. I have some Google also do some R&D over there कि क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या नुकसान. Let's talk about this JWT token. ये UUID के अलावा हम JWT token हम क्यों यूज करते हैं? Because it is very much secure and it's the industry standard right now. Lots of people they are using the JWT token for using the authentication and authorization. Basically, token का JWT token is meant for authorization, not for authentication. Okay, so it is a token implementation which will be in a JSON format. It maintains the data in a JSON format and designed to use in a further web request. It's the most common and favorite token type too that mainly system uses these days due to the special feature and advantage. JWT token can be used in both scenario authentication and authorization, but mostly for authorization, along with information exchange. इसके साथ हम user की information को भी exchange कर सकते हैं, which means we can share certain user related data in the token itself, which will be reduce the burden to maintain such details in the system on the server side.
It will be helpful in the microservices environment where multiple instances running on a different server and our application be stateless. Now, JWT token का structure क्या होता है? This is also very interesting. Each JWT contains encoded JSON object. अब ये encoded JSON object को contain करता है. This token is mainly composed with header, payload and signature. JWT token के ना 3 हिस्से होते हैं, all separated with the period. So like this. This is the one type of example of JWT. So the first part, which is in the yellow color, after that one dot symbol, that is the period, after this green, and then after this one, right? So after dot, so 3 sections are there. The first section is called header, second section is called payload, and third section is called signature. Now the important thing is that ये तीनों चीजें क्या है? Encoded format में, base 64 encoded format. तो इसका main data क्या है? Let's see that. So the main data in a header section, that is here what the first parameter. Basically, this header will contain what? Inside the header, we can store metadata, information related about the token. कि token के बारे में detail, कि token कैसा है, type क्या है इसका, और इसमें जो हम अपना secret password हम embed कर रहे हैं, तो उसको हम किस hashing technique से उससे हम hash कर रहे हैं password. Now, basically here, if I choose the sign to the token, the header contains the name of the algorithm that generates the signature. मतलब इस टोकन में जो ये सिग्नेचर जो थर्ड पार्ट है ना, उस सिग्नेचर को हमें साइन करना पड़ता है. दैट मींस वी नीड टू हैश दैट, और वो उसे हम किस एल्गोरिथम से हैश कर रहे हैं, दैट इज देयर वी नीड टू यूज दैट, वी नीड टू स्पेसिफाई दैट. सो एल्गोरिथम टू साइन दिस सिग्नेचर, दैट इज SMAC key 256 एल्गोरिथम इज देयर, यूजिंग दैट वी साइन दैट. सो द एल्गोरिथम, और इसी एल्गोरिथम से जब ये टोकन डिकोड होगा ना, सेम एल्गोरिथम विल बी यूज्ड बाय द स्प्रिंग सिक्योरिटी. So basically this is your what? Meta information और your header information. इस information को हम plain text में pass नहीं करते हैं. So all the information of JWT token will not be sent to the plain text. Instead we need to use the base 64 encoded to the value. तो इसको हम base 64 encode में ये JSON object को हम pass करते हैं, we will get this value. So this one, first yellow color. I hope you got the point. What is the header? Please confirm. Now payload basically the second part I'm talking about, this green signal, green here color. So payload में क्या होता है? In the body we can store details about the user role, which can be used later for authentication and authorization. So there is no such limitation what we can send and how much we can send in the body, but we should put our best effort to keep it light as possible. Body में आप तमाम चीजें भर सकते हो यहाँ पे यूजर से रिलेटेड, कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका इश्यूअर कौन है, किस टाइम पे वो टोकन इशू हुआ है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, सारी डिटेल आप यूजर की इस बॉडी के अंदर भर सकते हो इन जेसन फॉर्मेट. एंड देन यू नीड टू डू द अगेन बेस 64 encoded version and you will get that this particular string of this detail. This is your payload. The third part is really interesting, that is the signature part. So here signature basically क्या होता है? This is some similar kind of digital signature, but basically here to make sure that no one tampered the data on the network, we can add signature to the content when initially token is generated. Secure करने के लिए we need to sign this token with a signature. To create a signature part, you have to take one encoded header, the encoded payload and a secret key. आपको साइन करने के लिए 3 चीजें चाहिए. पहला क्या? ये encoded आपका header, string, encoded body part, second part, and one secret key. The secret key is a very important. So this secret key value will be known to the backend server application only, where it is issuing the JWT token. ये जो secret key है, ये आपको DevOps team वाले या फिर आपको आप environment variable कहीं से भी access कर सकते हो. एक कोई secret एक random key होता है जो आप backend application के पास ही होगा, किसी और के पास नहीं होगा. इन तीनों का combination and the algorithm is specified in the header and signed out. So for example, if you want to use the SMAC SHA 256 algorithm, the signature will be created in the following way. So this method we need to use SMAC SHA 256 and base 64 encoded of header plus base 64 encoded URL of payload. Dot symbol is there, and here is your secret.
इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, एक, that means the signature is used to verify the message was not changed. We need to create a signature. So signature is a combination of one algorithm which will take your header part of this value, dot your body part, and comma your secret. That means the secret key. Secret key जो होता है वो हमारे सर्वर के पास सिक्योर रहना चाहिए. And based on that, after this SMAC key, it will return one token. That means this token will be returned. So this is your header, this is your body, and this is your signature part. Signature part, you won't be able to see that. So here is that we can play with the JWT token. There is a one website, JWT.io debugger, to decode, verify, and generate the JWT. So let's go to this website and see that how this website will look like and how we can play with this JWT. So there is a debugger. You can see that this is your encoded JWT. This is your header part, this is your body part, and this is your signature. So you can say see here after decoding, here is your header, here is your body, and if you see the signature, so signature is what? It is not showing the exact signature key, the secret key kya hai. Because of the secret key, you are not able to see the entire signature details. It is not decoded. Here only you are going to see that this algorithm, it is used to take that header, dot, your body, and plus your secret key. So based on your secret key, the value will be decoded here. So since you don't know about the secret key, that's why you are not able to see that value. Does it make sense? Please confirm. So you can print any JWT token here and you can get the details. You'll be able to see that header part. You'll be able to see the body part, but you won't be able to see that what is the signature, what is the secret key. Because secret key, based on that secret key and the header and body part only, the signature will be created for you. So this is all about that JWT token का structure क्या होता है, how this JWT token will look like. Now let's try to use this JWT token in our application. So making use of JWT token inside our application. कैसे use करेंगे? बहुत ही simple step है. पहले user need to give the registration himself. That means he has to sign in. He has to pass the username and password. सर्वर का काम क्या है? उसे authenticate करेगा. He will be authentication is done. After authentication is done, server will issue one token, JWT token, to the client. ये token हमारा चला आएगा as a header of authorization. ये चला आएगा हमारा client के पास. Now, अब अगली बार client को किसी protected resource को call करना होगा, so he need to add this JWT, just like हम CSRF token हम भेज रहे थे ना, उसी तरह हमें authorization header होना चाहिए and bearer के बाद space और आपका JWT token. ये हम पास करके भेजेंगे, तभी हम किसी प्रोटेक्टेड एपीआई को कॉल कर पाएंगे. Am I clear? Please confirm. So this is the flow how this JWT token will work. So user will sign in with the username and password. Backend server verifies the credential and issue a token signed using a private key. Private key के थ्रू sign करके token उसे भेज दिया जाएगा as a response header. Client uses the JWT to access the protected resource by passing the JWT HTTP authorization header. Backend server then verify. Backend server फिर से verify करेगी कि okay ये token मिल गया, ये authenticated user है नहीं. अगर है, it will check out that with the secret key and grant the permission with the protected API. Okay. So अब हम अभी use करते हैं. So once the filter chain will done, it works, and the second time, second request, the JWT token will be used. Very good guess. So नीतीश has guessed very correctly कि filter हमारा, अब filter समझ में आ रहा है ना नीतीश की filter हम क्यों कर रहे थे, कितना टाइम हम filter पे क्यों waste कर रहे थे, because to understand this JWT token concept clearly. Now, in order to use the JWT in our application, what we need to do, we need to first add this dependency, JJWT API, JJWT IMPL, JJWT Jackson. These three dependencies we need to add. ये डिपेंडेंसी ऐड करते ही आपको कुछ लाइब्रेरी मिल जाएंगी जिससे कि आप JWT टोकन को काफी आसानी से बना लोगे अपने बैकएंड एप्लीकेशन में. So let me create this application first. I'm going to copy this role app once again.
and I'm pasting this one over here. String security role JWT, and copy it. Let me change the name of this application first. And I need to let you change this artifact ID as well as this application name. Paste it. Save it. अब हमें let me stop the server first. So here is our application for JWT. इसके अंदर हमारा रोल और ऑलरेडी बाकी चीजें यूज हो रही हैं, सेम एप्लीकेशन है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, हमें 3 डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। कौन कौन सी? लेट मी जस्ट गो टू दिस and first JJWT API. So you can search that in your MVN repository, that is JJWT API MVN. So this is the JJWT API 0.1.5 dependency and paste it. अगली कौन सी है? That is JJWT IMPL. So you can search it over here, JJWT IMPL. So JJWT IMPL, you can click on this. Zero point 1.5. Push this, and the last one is your JJWT Jackson. So JJWT Jackson. So take this one. So these dependencies will be configured and it will be added. Now we are able to use that JWT related APIs after adding this dependency. So let's go with our notes. Now step 2. This is the first step. We need to add this dependency of JWT. Perform some changes inside our Spring security configuration. तो हमें 2-3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी अपने Spring कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। पहला तो चेंज ये करना होगा कि हमें कहना पड़ेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी को कि हम इस बार सेशन आईडी यूज नहीं करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द जे सेशन आईडी कुकी। इस बार सेशन हम खुद से मैनेज करने वाले टोकन के हिसाब से। So as of now, inside our application, by default, Spring Security is generating JSession ID. It uses the JSession ID for all the subsequent requests that our user is going to make post successful authentication. So we need to disable that behavior because what post that we can generate our own JWT token. So first of all, what we need to do, we need to write this statement. इसका मतलब क्या होता है, हमें अपने सेशन क्रिएशन पॉलिसी को एक स्टेटलेस बनाना होता है। We need to create that one. We need to stateless. I'll make that stateless. So we need to go to the configuration, app config, and here after HTTP, enter dot and paste it. Sorry, and let's it properly. Like this. So in the first statement, what I did, HTTP dot, ये हमारा HTTP security है, session management, so I need to call, and session management, it will take as a lambda expression. Session creation policy, that will be the session creation policy dot stateless. इसका मतलब होता है कि हम अब JSession ID पे डिपेंड नहीं करेंगे। अब further subsequent request के लिए please don't use JSession ID. I'm going to manage my token based authentication. Is it okay? Please confirm.
हेलो। स्टेप 3 ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल किस लिए है कि अगर आप यूआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए, फॉर दैट वन यू नीड टू एक्सपोज वन हेडर, ऑथराइजेशन हेडर। इसी से आप टोकन को आप एक्सपोज करोगे। अगर आपने ये कॉर्ड कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर नहीं किया तो आपके पोस्टमैन में तो काम करेगा, आपके बैकएंड एप्लीकेशन से आप अगर अपने एपीआई को कॉल करोगे वहां पे भी काम करेगा, बट इट विल नॉट वर्क इन योर यूआई एप्लीकेशन। यूआई मतलब द एप्लीकेशन विच इज मेकिंग यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉल। Because of the cost origin problem, this extra header information will not be able to get by the UI application. In order to expose that header, you need to make use of this expose header to our front end. JavaScript के लिए एक extra उसे response header मिलेगी जिसके अंदर उसका token होगा. So you need to configure this. It is only applicable if you are making use of JavaScript. That means your UI call, आप अपने API को UI JavaScript से call करते हैं. So you need to do this configuration. As a recommendation approach, always make use of this configuration. So for that one, we need to use this cost configuration. Cost configuration कैसे use करना है, you know better than me. So this is that dot. इससे पहले हम dot लगाते हैं cost and customizer. We need to make use of import over here, that is arrays class, which is not open. It will be Java HTML. This is just another one here. Cool. So it is be like that only. Let me just add this cost configuration properly. So it's not pasted here. So you have to be careful little bit here. You need to just go with this HTTP dot session management dot ये हमारा authorization. It should be like this. I have not formatted it properly. That's why. And here it is. This is completed. Our session management and authorize HTTP request. Here it is. And this is CSRF. Form logic. अब हमें क्या ऐड करना है cost configuration. So let me just do that one. So you can use anywhere. That means you can use before session management or after this one also. So better to use that after session management. So यहाँ पे हम use कर लेते हैं इसे dot cost and customizer. अब इस customizer की जगह पे क्या होगा? You need to use cost, people and the expression and what sorry. And here what we need to do? That is cost dot configuration form. Dot configuration form. यहाँ पे पास करना है हमें एक नया ऑब्जेक्ट न्यू कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन कोड. So new cost configuration code. This is an anonymous class, and here it is. Method is also overridden. So in this, you need to create cost configuration object. This is the semicolon. Cost configuration. PHP.
is equal to new dot configuration. And you need to do this configuration and fix this one and return this object. Like this. Import this unnecessary import. I can clear the collection, arrays, over. So this is your configuration details are there. You need to just take little care about this. Sometimes if your imports and you are not using properly this details, because it is basically it is internally using chaining mechanism. HTTP dot session management और इसका details फिर उसके बाद dot caught फिर उसके details dot authorized request HTTP request that details then after CSRF details then after form login basically login. Am I clear? Please confirm. Hello. Now here in this one, this is a very important. Otherwise, your JavaScript table will not going to get your token with this response header. So this is your step number 2. Now the next step. So here basically what's happening there is also mentioned. So set expose header method. What it is doing, it is already mentioned. So we can expose the headers that we are sending inside this with the code configuration. Now, step number 4, we need to create a JWT token generator filter. अभी चौथे स्टेप में हमें एक फिल्टर जनरेट करना होगा, फिल्टर क्रिएट करना होगा जो कि टोकन को जनरेट करे, ठीक है? वो कब? ऑथेंटिकेशन होने के बाद. तो टोकन जनरेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहले हम आई एम गोइंग टू क्रिएट वन इंटरफेस टू पुट टू कांस्टेंट. So let me create this security constant interface. So in our config itself, I'm creating one interface. Security constant. This is an interface. और इस इंटरफेस में हम दो कांस्टेंट पुट कर रहे हैं. इंटरफेस के अंदर हम मेथड भी रख सकते हैं और कांस्टेंट भी रख सकते हैं. So I'm going to take this two constant. वो क्या क्या है? Let me show you. So if you see this header, so I just mentioned this is an interface and the public static final. और हमें पता है कि अगर हम लिखे या ना लिखे ये पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होता है अगर कोई वेरिएबल हम इंटरफेस के अंदर रखते हैं. Isn't it? Please confirm. Inside an interface, if you keep any variable, that variable is by nature public static final, whether you mention it or not. Am I correct? Yes. So you can mention or without mention also, no problem. So these are like that. So first variable I am taking was JWT key. This is your secret key. So ये secret key है क्या? कुछ भी randomly एक बड़ा सा string. Previously in the older version of JWT, you could put this small string also, but here you need to take a large enough string. Minimum 15 to 16 character length. So that secret key you need to take. ये secret key हमने यहाँ पे रख रखा है, लेकिन real time जब हम JWT वाले application बनाते हैं ना, तो ये secret key हमें DevOps वाले team वाले हमें देते हैं या फिर हम environment variables हमें मिल जाता है. So that is known to our backend application only. It's a secret key. और एक हमने और JWT header ले रखा है, that is authorization. ये क्यों? क्योंकि इसी header से JWT token आएगा या जाएगा. मतलब रिस्पॉन्स के साथ क्लाइंट के पास इसी हेडर के थ्रू जाने वाला है और रिक्वेस्ट के साथ भी अगली बार इसी हेडर के थ्रू JWT टोकन आने वाला है. तो इसे भी हमने एक यहाँ पे कांस्टेंट में वेरिएबल को असाइन कर लिया है. नथिंग मोर देन दैट. तो पुट दैट इन अ सेट that means a separate position. I just took a two variable JWT key, JWT header. अच्छा. Next step, what is that? We need to create one filter. We need to create one filter that is JWT generator filter. Let me create this filter. And now you'll be able to understand this filter very easily because you know about this all the concepts of the filter. So let me copy this class and paste this. Then after we will discuss about this filter.
ओके, लिसन केयरफुली। पहले तो शुरू से बात करते हैं। JWT टोकन जनरेटर फिल्टर, ये टोकन जनरेट करेगा। इस फिल्टर को हमने एक्सटेंड किया है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। सर हाउ डिड यू ब्रिंग दिस इंपोर्ट ऑर्गेनाइजर? जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ। If you just use that one, import control shift and O, automatically it will import all these things. Control shift and O. Okay, so no need to explain about this filter. We have discussed once per request filter. ये filter कैसे काम करता है, इसके मेथड के भी बारे में हमें मालूम है। डू फिल्टर इंटरनल, जिसमें 3 पैरामीटर्स हैं। Cool. इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं, शुड नॉट फिल्टर। और हमने यहाँ पे वही चीज लिख रखी है। क्या इसे बताने की जरूरत है? क्या काम है इसका? नो। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ कब एग्जीक्यूट होगा? सिर्फ साइन इन के वक्त। जब हम साइन इन करेंगे तभी टोकन जनरेटर फिल्टर हमारा एक्टिवेट होगा, और ये फिल्टर हमारा उसी वक्त काम करेगा, और ये हमें एक टोकन जनरेट करेगा। कब? जब हमारा यूजर साइन इन के लिए, जब साइन इन कोई कॉल करेगा उसी वक्त। बाकी किसी एपीआई के लिए ये फिल्टर काम नहीं करेगा। देखते हैं, अगर आप किसी दूसरे एंड पॉइंट को कॉल करो तो ये फिल्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। Now next thing, let's come back here. So I have just used that one log message, that means inside filter not required. You continue. This thing also no need to explain what is the meaning of this. Basically I am going to apply this filter. आप मुझे बताओ ये फिल्टर कहाँ अप्लाई होगा? बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले या बाद में? सोच के बताओ। बिफोर और आफ्टर ये फिल्टर अगर हम अप्लाई करें तो? बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले या बाद में? ऑफ कोर्स आफ्टर। क्यों आफ्टर? क्योंकि टोकन जनरेट कब होगा? जब यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर यूजर ने सही यूजर नेम पासवर्ड पास किया तभी तो टोकन जनरेट होना चाहिए ना। आफ्टर लॉगिन, आफ्टर यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। अगर यूजर ने लॉगिन ही नहीं किया सक्सेसफुली तो फिर टोकन हम क्यों जनरेट करें? दैट मींस डेफिनेटली इट विल बी एडेड आफ्टर द बेसिक ऑथेंटिकेशन। मतलब ये जब फिल्टर एग्जीक्यूट होगा तो मतलब ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट हो चुका होगा। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर से हमें ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया है ना। अगर ऑथेंटिकेशन नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है मतलब ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अगर नल है तो हम एल्स पे जाएंगे। सिक्योरिटी एल्स ब्लॉक हमने लिखा ही नहीं है बेसिकली। दिस इज द इफ पार्ट, दिस इज द एंटायर इफ पार्ट, राइट राइट। तो अगर ये नल नहीं, ऑथेंटिकेशन हो चुका है, then what I'm going to do, this is only one log message, you can remove this one after. Listen carefully. First of all, I'm going to take a secret key, और उस secret key को स्मैक SHA की के फंक्शन से हम क्या करेंगे, उसे हम इनकोड कर देंगे अपने secret key पे। How I have done that one? There is one class called keys in which have the static method smack SHA key for security constant .jwt.getFile. I hope it is a self-explanatory. ये हमारे की को लेगा और इसे सिक्योरिटी से इनकोड कर देगा, हैश कर देगा। दैट मींस स्मैक SHA की फॉर्मूला के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू इट विल बी हैश पासवर्ड। दैट मींस योर की सीक्रेट की विल बी इनकोडेड। एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म। दिस इज योर JWT की। ये कौन सा है? ये आपके सिक्योरिटी कांस्टेंट है। JWT की ये आपका सीक्रेट की है। दैट की विल बी encoded in this key variable secret key. We got that. Now there is another class charts, JWTS charts class, in which we have the static method. In which we have the static method here. After line number 31, please explain sir. This one. So I'm talking about this one only. So once authentication is done, so if it is not null, matlab authentication successful hai. So the first statement, there is one class called keys in our JWT API, in which there is one algorithm method here, smack SHA key for security constants .jwt key .getFile. ये आपके secret key को लेगा और इस algorithm के through इसे encode कर देगा, and you are going to get one object of secret key. This line, is it comfortable? Everyone, please confirm. Hello. Good. Now there is one class called jot, in which there is one static method builder, and by using that you need to use the builder pattern. You can specify the body part of your JWT.
मतलब there is a one method set issue. You can give the name of a particular user or any person like Masai user or Ram, Syam, whatever. Now set subject. You can give your developer name also, your company name also, which company has issued this JWT token. Set subject. Subject में भी आप कुछ value डाल सकते हो. It is your wish what the things you are going to put. So here set subject is the JWT token. Claims, using the claim method, you can put the user related details. User related details, you can put that in your body system. तो हम यहाँ पे पहला डिटेल पास कर रहे हैं यूजर नेम. वो नेम कहाँ से मिल जाएगा हमें? इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारे पास ऑथेंटिकेशन डॉट सेट नेम. अथॉरिटीज, ये अथॉरिटीज हमें इससे मिल जाएगी, लेकिन ये अथॉरिटी के लिए क्या चाहिए हमें? अथॉरिटीज हमें ग्रांटेड अथॉरिटी के फॉर्म में है हमारे पास. So we need to get those authorities from the list and we put that in a comma separated value. In a comma separated value, we need to get these authorities. So what I did here, authentication के अंदर get granted authority, get authorities is the method. It will return the list of granted authorities. हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने एक method लिखा है populate authority, and in that I just pass this get authorities method. ये करेगा क्या? ये इस granted authorities की सारी लिस्ट को निकाल के कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल यूजर के पास अथॉरिटी है यूज एडमिन की, एडमिन कॉमा लेट्स से दैट इसके बाद मैनेजर की, मैनेजर लाइक दैट. इट विल पुट दैट इन अ कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग. लेकिन हमने ये कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग करने की बजाय हमने क्या किया है? आई हैव क्रिएटेड वन मेथड पॉपुलेट अथॉरिटी, और उसमें हमने ये ऑथेंटिकेशन के लिस्ट अथॉरिटीज की लिस्ट को पास कर दिया है. ये हमारी मेथड रिटर्न कर देगा हमें कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग. ये मेथड हमने यहाँ लिखा है. इट विल टेक दैट योर ग्रांटेड अथॉरिटी ऑफ कलेक्शन एंड रिटर्न दैट कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग. हमने क्या किया है? यहाँ पे एक अथॉरिटीज की हैशसेट बनाई है और वहां से सारे वैल्यू को निकाल रखा है. निकालने के बाद इस हैशसेट में वैल्यू को हमने ऐड कर दिया सारी अथॉरिटी वन बाई वन, और स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड है ज्वाइन, पास दिस कॉमा एंड पास दिस सेट. So all the value from this set, collection set, will be just comma separated value to be populated in a string, and it will return the string. मतलब इस मेथड का प्योरली मतलब ये है कि ये लिस्ट ऑफ ग्रांटेड अथॉरिटी लेगा और उन सब अथॉरिटीज को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा. Am I clear? Please confirm. Good. And this method I just used here and pass this authentication dot authority. तो यूजर की जितनी भी अथॉरिटीज है ना, जो कि ग्रांटेड अथॉरिटी इंटरफेस के अंदर की लिस्ट के अंदर, अब वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में अथॉरिटीज के साथ वैल्यू चली जाएगी. नेक्स्ट वन, सेट इश्यूड एट. ये टोकन कब हम इश्यू कर रहे हैं? आज का डेट. वी शुड नॉट यूज योर लोकल डेट, इट विल नॉट वर्क. वी हैव टू यूज दिस util डॉट डेट. नाउ सेट एक्सपायरेशन डेट. यहाँ से हम टोकन की एक्सपायरेशन डेट को सेट कर सकते हैं. ये टोकन कब तक एक्टिवेट रहेगा, और तो टाइम खत्म, टोकन हमारा एक्सपायर हो जाएगा. So here new date plus dot get time, and I have added these milliseconds. This many millisecond will approximately 8-hour time will be there. You can give as much as your possible. अभी के टाइम में कितना मिलीसेकंड आप ऐड कर दो, those many millisecond you can add. If you want to add your token for only 1 hour, so उतने मिलीसेकंड आप निकाल लो 24 hour की, and you can add that. So those many times this token will be activated. After that, this token will be automatically disabled. And then last one, sign with your key. So this is your key. You have already generated your hash key, and that key, after that you need to do the compact. So here is your JWT token will be there. Am I clear? Please confirm. Cool. अब करना क्या है हमें? इस फिल्टर के अंदर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है. इस रिस्पॉन्स में हमें ऑथराइजेशन हेडर के थ्रू वैल्यू को सेट कर दें. So this header is what? Your authorization header. Authorization header, and this is your JWT token. उसके बाद filter dot do filter. हमारा काम आगे की तरफ चला गया. That's it. I hope everyone got the point here. Please confirm. How this do filter will work now? Can you guess what should be the next step? अगला स्टेप क्या होगा?
Please confirm. Nikis is saying if there is an error in Spring Security app debugging, it will be a pain. No, not a pain. You can just put some SOP message and you can check out that what's going wrong. First, I recommend that take this example and execute. Yes, Ritik, you are absolutely correct. We need to configure this token. We need to configure this token after basic authentication. So let me copy this and in app config, what to do? Here. After CSRF disable, you can add filter after. Add filter after. That is your new AWT generator filter. And this is basic authentication filter. अब आपको समझ में आ गया कि हम क्यों पढ़ रहे थे ये ऐड फिल्टर आफ्टर, ऐड फिल्टर बिफोर। तो अब अगला काम क्या होगा, ये फिल्टर तो हमारा जनरेट हो गया, हमने इसे कॉन्फ़िगर भी कर लिया, स्टेप 5 इज आल्सो कंप्लीटेड, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज हाउ वी हैव टू do it. Now inside the above filter what will happen, all the details is also mentioned here, कौन सा काम क्या है, should not filter क्या काम करने वाला है, and how this will going to work for only signing API. Now let's move to the step 6. Step 6 में क्या करना है हमें कि basically we need to create one sign in endpoints जो कि हम already बना चुके हैं। sign in API के लिए हमें क्या करना है, it will return that all the details and it is already there in our class application. So that particular customer got sign in and we have already done that one, it is there in our controller. Let me show you. Customer controller and it is here, the sign in endpoint is there. The same details it is mentioned. Now step number 7, ये स्टेप तो बन गया, साइन इन हमारा कंट्रोलर भी काम कर जाएगा। अगला स्टेप आप खुद से सोच सकते हो क्या होने वाला है। दैट मीन्स अब यूजर साइन इन हो चुका है और उसके पास रिस्पॉन्स में एक टोकन मिल गया है। अब उसे क्या करना होगा, अगले रिक्वेस्ट के लिए अब वो सेशन आईडी पे डिपेंड नहीं हो सकता है, उसे टोकन भेजना पड़ेगा, राइट। टोकन कैसे भेजेगा वो, he will send the token using authorization header, that means request header में authorization, ये हमारा हेडर का नाम होगा और टोकन होगा बेसिक बियरर स्पेस एंड हिज टोकन। तो ये हमारा हेडर का नाम होगा ऑथराइजेशन और टोकन को बियरर वर्ड के साथ टोकन को भेजना पड़ेगा, बियरर स्पेस एंड टोकन। ऐसे ही वो अगला रिक्वेस्ट हेडर में ऐड करके टोकन को भेजने वाला है। तो हमारा काम क्या होगा, हम एक और फिल्टर लिखना है और वो फिल्टर क्या करेगा, उस टोकन को वैलिडेट करेगा और अगर वैलिडेट हो जाता है हमारे सिग्नेचर के साथ तो क्या करेगा, उसे अलाउ कर देगा कि दिस पर्सन इज ऑथेंटिकेटेड। मेक सेंस? प्लीज कंफर्म। So for that one, I need to create another filter, KWT token validator filter. So let me create this one. KWT token validator filter. And this one, I'm going to replace with this replace that. Okay, first copy this and then after I'll discuss about it. Cool. So to save this one, put one more bracket closing. इसमें आप देखो ये फिल्टर में हमें should not फिल्टर के लिए यूज की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस फिल्टर में हम क्या नहीं करने वाले हैं, इसे हम हर फिल्टर हर रिक्वेस्ट के लिए जो भी हमारे पास आएगा साइन इन के अलावे, तो हम सब के लिए चेक करने वाले हैं, राइट। ये किसी एक के लिए एक्सक्लूसिवली हम रोकेंगे नहीं, तो सबके लिए हमें चेक करना है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट, शुड नॉट use the filter. If you want, you can make use of what should not filter. Actually, we should use that one. So let me just in fact override this method as well. आप चाहो तो सबके लिए यूज कर सकते हो, वहां पे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि साइन इन के लिए भी आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा, वैलिडेट आपको रोकने लगेगा। तो आई एम जस्ट पेस्टिंग दिस वन एज वेल। Okay, so what I am doing here, should not filter here, I just use, actually let's start with the beginning.
So first, once for request filter, yes, it is also there. Do internal filter. Now, next one here. ये फिल्टर हमारा कब काम ना करे? आप यहाँ ध्यान से देखो, साइन इन के लिए काम ना करे। साइन इन के लिए ये हमारा टोकन वैलिडेशन वाला काम ना करे। साइन इन के लिए सिर्फ कौन सा काम करे? हमारा जनरेट करने वाला, टोकन जनरेट करने वाला, राइट? क्योंकि साइन इन जब हम करेंगे तो टोकन जनरेट होगा, टोकन वैलिडेट नहीं होंगे। उस वक्त कोई साइन इन करते वक्त कोई टोकन नहीं भेजने वाला। So in that case, I'm saying that, hey, should not filter that when your endpoint is signing. Okay. Please confirm. Yes. Here I have not applied the not operators here. So this filter will work only for that what? Apart from signing, it will work for any other API. Okay. Now let's come back here. इस filter का purely purpose क्या होगा? हमारे token को validate करना। तो हमने क्या किया? यहाँ पहले request.get header हमने निकाल दिया। ऑथराइजेशन वाला हेडर हमें मिल जाएगा यहाँ पे JWT टोकन। लेकिन इस टोकन में हमारे पास वर्ड रहेंगे बियरर और साथ में स्पेस और फिर टोकन। तो इफ आई हैव रिटन दैट इज अगर टोकन नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो क्या करना है हमें? इन अ ट्राई कैच ब्लॉक आई हैव रिटन सम लॉजिक एंड इन अ कैच ब्लॉक अगर कोई एक्सेप्शन आता है अगर अथॉरिटीज एक्सेस करने में या फिर कुछ और प्रॉब्लम, तो इट विल से दैट इनवैलिड टोकन रिसीव्ड, राइट? लेकिन अगर टोकन मिल गया हमें तो आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड बियरर पहले। तो JWT टोकन से डॉट सब स्ट्रिंग 7 ये क्या करेगा? इस टोकन से बियरर वर्ड को हटा के अब आपके पास प्योर टोकन आ गई। Isn't it? Please confirm. Hello? Yes, here we got that pure token, right? Now here what I did, first I again take that key, हमें फिर से की बनाना पड़ेगा। तो keys dot hmac key for our की, जैसे हमने पिछले बार की बनाया था यहाँ पे सीक्रेट की का ऑब्जेक्ट अपने सीक्रेट की के। Now after that, once the secret key is done, I need to create that what? Take that claim. User की claims को निकालना है। So what were the details I am using that? First of all, I need to use this dot class dot parse builder is a method set signing key. इस key के साथ signing करेंगे, build करेंगे and parse claims of AWT. इस token को claim करेंगे and we get that body. Once we get the body from this claim, तो हमें उसके बॉडी पार्ट मिल जाएंगे, हेडर और सिग्नेचर छोड़ के उसके बॉडी पार्ट मिल जाएगा इन दैट पर्टिकुलर क्लेम, इन द क्लेम ऑब्जेक्ट। और उस क्लेम से हम निकालेंगे यूजर नेम इन डॉट वैल्यू ऑफ, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वैल्यू ऑफ में हम पास करेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट। यू कैन ईदर यूज द डाउन कास्टिंग और यू कैन यूज इट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, बिकॉज ये आपको स्ट्रिंग का वैल्यू ही निकाल के देगा लेकिन आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। तो यू नीड टू यूज ईदर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और यू कैन यूज द डाउन कास्टिंग। तो क्लेम डॉट गेट यूजर नेम, आपको आपका यूजर नेम मिल गया एंड क्लेम डॉट गेट अथॉरिटीज, आपको अथॉरिटीज मिल गई। लेकिन ये अथॉरिटीज आपकी लिस्ट वाली अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी कैसी होगी? प्लीज कंफर्म हाउ दिस अथॉरिटी विल लुक लाइक। दिस अथॉरिटीज विल बी द कॉमा सेपरेटेड अथॉरिटी, इजंट इट? क्योंकि जब हम जनरेट कर रहे थे तो वो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, हम आपने वो मेथड देखा होगा पॉपुलेट अथॉरिटी, वो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था। So these authorities you are going to get in a comma separated string, like that clerk, manager in the comma separated. Everyone is comfortable? Please confirm till this point. Hello? Good. Now what I need to do, based on these details, I'm going to create this authentication token, मतलब authentication का object हम बना रहे हैं manually कैसे? So new username password authentication token, passing the username, I'm not passing password, password की जगह पे हम null पास कर दे रहे हैं। और हमारे पास एक क्लास है स्ट्रिंग सिक्योरिटी में, उसका नाम है अथॉरिटी यूटिल। उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग टू अथॉरिटी लिस्ट, और आप अपने कॉमा वाले अथॉरिटीज की स्ट्रिंग को पास कर दो। ये आपके कॉमा वाले अथॉरिटीज वाले स्ट्रिंग को क्या कर देगा? अथॉरिटी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। दैट मींस ऑटोमेटिकली इट विल डू फॉर यू। अगर आप चाहते हो वो मेहनत खुद से करना कि कॉमा सेपरेटेड वाले अथॉरिटी से कॉमा निकाल के उन सारे अथॉरिटी को ग्रांटेड अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट में ऐड करे और लिस्ट में ऐड करे, यू कैन डू दैट, बट इट विल बी अ टीडियस प्रोसेस।
So you need to use authorities utils dot comma separated string to authority list. See that method name itself, it is saying what it is doing. और ये आपके कॉमा सेपरेटेड अथॉरिटीज आपकी लिस्ट बन जाएंगे, जो इस मेथड का थर्ड पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर का. Because whenever you want to create the username password authentication token, you need to pass three things: username, password, or granted authorities list. Since password you are not able to extract that, so and we should not share the password in our JWT token, so I'm passing this null and our authorities. और अगला काम क्या होगा, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को पुट कर देना, मतलब ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुल है. Isn't it? Please confirm. Hello. Yes. And at last simply do the filter here. Chain को आगे की तरफ बढ़ा दे. That's it. So this filter is done. Last part is remaining. You guess what? Validation भी हमारा हो गया है. अगला स्टेप क्या होना है? Please confirm. Hello. Configuration. So JWT token validation filter को हम यहाँ पे configure कर दें. Add filter before. This is new JWT token validator filter और basic authentication के पहले. That's it. क्यों सर बेसिक ऑथेंटिकेशन के पहले क्यों? क्योंकि इस बार हमारा टोकन वैलिडेट करेगा. टोकन अगर सही है मतलब यूजर ऑथेंटिकेटेड है. इस बार से यूजर नेम पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है. अगर टोकन वैलिड है तो हमने मैनुअल ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बना के सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फोल्डर में ऐड कर दिया है. तो अगर टोकन वैलिड है तो यहाँ पे हमने मैनुअली ऑब्जेक्ट बनाया है ऑथेंटिकेशन का एंड वी kept that in our authentication security context folder. Am I clear? Please confirm. Yes. And that's it. So this is our last step. Let's run this example and see that whether it's working out. So my application got started. This time you will notice if I will give the request. First of all, let me do the login here. So I'm going to do that sign in. Let me in fact take off this tab and http ://localhost 2080 / और हमें यूजर नेम पासवर्ड भेजना है. So go to that here, basic auth, username, password, and I'm sending the request. Now I'm logged in successfully. 202 accepted. Now you can notice in a header section. In a header section, you can see here there is an authorization tab is there. Authorization one header is there. और इसके वैल्यू को आप देखो क्या है. This is your your token. Let me copy this token, JWT token, and paste it where in this website. That is JSON web token here. And remove this one and paste this your token. See that here what are the details. All the payload you are able to see that. One, what is the expiration time? Even you can see that authorities as well, right? Your header information also you will able to see that. But signature you won't be able to see that secret key. Secret key you are not able to see. आपका signature कैसे generate किया है? Make sense? But here all the details you are able to see. Am I clear? Please confirm. Hello? साइन इन तो हो चुके हैं, ठीक है, हमें साइन इन मिल गया, लेकिन क्या अब हम यहाँ पे कस्टमर्स कॉल कर सकते हैं? Right now it will not going to use session cookies.
So if I try to call this customers to get all the details, you see that what will happen? Unauthorized. No, you are not allowed to do that. Even though I am passing this username password, but I'm not allowed. In order to call this one, what we need to do? Give me the answer. हमें request header पे जाना होगा. We need to give the header. कौन सा header? Authorization. And what should be the value? Value should be actually not authorization. Sorry, not authorization. You can take it directly here. Go to the authorization tab. You need to go to the bearer token. ये अपने आप authorization और bearer token में चला जाएगा value. So you can choose from here. Bearer, and here you can just this paste your JWT token, and now call this customer. Here is your all the customer details. Does it make sense? Please confirm. तो अब आपके जितने भी आप API को कॉल करोगे, you need to pass this token, and if you see this header, you'll be able to see it is authorization, bearer, and here is your token, how it is going here. But the shortcut is you can go to here, you can choose that bearer token and pass the token over here. You are allowed to call this API after the login. Make sense? Once it was logged out, that means that time when I passed the wrong value, that's why it was showing exception, otherwise it will work perfectly. So here it is that your how the JWT is working. Lots of problem I have seen that lots of the students, even not in the Masai, some other companies also, even from the Cognizant and Capgemini, they daily basis they used to send me a message, sir, I am not able to not able to get that how this JWT is working. Please share me the example or the concept. But unfortunately, I didn't have the time. Even if you try to learn this JWT from the YouTube and some other website, so you won't get the proper clarity. It is the latest version of Spring Security, and everything is working in front of you. And you know that all the details, how this JWT token is working, what is the purpose of the filter, and how this filter is configured with this add filter add before add, and what is this all the filters. Once for this filter, what is the meaning of this should not filter me. Am I clear? I will share all these application, whatever I have created today in that list on our LMS. So please do the practice on that and at least try to execute some example. And once you get the request for sign in, then you'll get the token. After that, add that in a bearer token and you'll be able to call all those APIs. So this is it for how to use a token-based authentication. Just read that note. It is clearly mentioned what is the benefit and what is the drawback of token-based authentication. But I still recommend to just have some go to the Google, check out that what is the benefit and use of JWT token in configuration file. Lokesh is having one very serious question. What is that? That is, sir, for evaluation, how to remember so much configuration? So much configuration you need not remember in evaluation. You can take that some JWT or those configuration related keep notes there. It is allowed there. Or might be it is possible if you want to use that in your application evaluation. So the code will be shared with you. The application configuration will be shared with you. You need to just arrange those codes accordingly. Okay. Please confirm. And by the way, one announcement is that tomorrow we have the session because we are lagging behind 2 sessions. This is a really important announcement. Listen carefully. I just tried my best to explain, even though the session is too much long, but I took the session. I didn't skip any part. I tried my best to understand you all the concepts, to make you understand all those concepts from the very start. But due to that, we just lack some concepts. For that one, tomorrow we have a session in that we are going to complete our unit testing. Unit testing we are going to complete. And one topic will be pending for you. That is what? Spring Boot testing, SpringMock or SpringMvc testing, and RestTemplate. This is a 1-day session. That session related video or live session I will share with you on our construct week. Construct week, when you are doing the project, that time I will share that video or that one particular session. I will take that one for you. So don't worry, I have already promised you I will not miss any single concept to you.
everything I will try to give you as much as possible. Otherwise, if I just go with the normal protocol, I should complete this session by 10:30. It is 10:45, but still I'm explaining to you only for yourself. So I'm doing my job honestly. It's your turn. You please execute these examples. Try to do some R&D with this example. Try to understand this concept. Do some R&D if you want to get better and better in this thing. Because in industry, you are going to work a lot with the Spring Security, and you can help to your other friends and some other colleague as well how the securities are working. Thank you, everyone. Zaki, let me stop the recording.